domain in pharmacovigilance, and we include this session because most of the time there is opening for the freshers in the MICC. So for that reason, you need to know what is that department and how you can work, what is the workflow, how should be the future, and how to join. So every question related to that department you can ask. So we have a experienced person from the MICC domain who has a good experience in this domain. They are worked in the top MNC company in MICC. So they will discuss everything through the slides to you. Okay, and you just all note it down and learn all things. Okay, and at the end of the session, you can ask your any kind of the query. So are you there, ma'am? Yes, yes. Hi everyone, good Yes. morning. Yes. Good I hand over morning. session to you. Yeah, you can start. Thank you. Sure, Good sure. morning, ma'am. Good morning. Thank you, Amit. Hi, good morning, all. I hope you all are doing good. As Amit just discussed and mentioned, that today we are here to discuss about MICC, which is Medical Information Contact Center. Before we start with this presentation, I just want to tell you guys that I have not used any, or I have not made the presentation very difficult for you guys. I have used very common words, and I have tried to include all those things which we are doing in MICC. It's very easy. And if you have any questions, please do feel free to ask me. And we will start with the session, and I'll share my screen. Give me a moment. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Okay, so we are here to discuss about medical information call center or medical information contact center. But before I go and describe you what is there in the slide, I have just a small question for all of you. I'll not ask any technical questions. I'm not here to check your knowledge, guys. It's just a common question. For example, you are using any kind of SIM, Vodafone, Geo, Airtel, whatever it is. You recharged your mobile phone today, but it's not showing on your account. So what you will do? Anyone, what you will do? It's a very common thing which happens. We contact the call center or network center which SIM we used. Line number. Right, exactly. This is what I wanted. So for example, I recharged my SIM. It was successful, but it is not showing on my account. So what I will do is, for example, if I'm using Vodafone, I will contact their call center. As soon as I contact their call center, someone will assist me. They will ask me a registered telephone number, my name, and with the help of that, they'll be able to see within 5 minutes or before 5 minutes, before 1 hour, I was doing the recharge. It was successful, but it was not showing. So it might take 42 hours or 1 hour or 2 hours, and they'll give the resolution, right? Just like that, if you have purchased anything from Amazon or Flipkart, you returned your product, but you have not received your refund, what you will do? You will contact the Amazon call center, right? That I have returned my product, but I have not received my refund yet. They will ask your telephone number, they'll ask your name, they'll ask for which product you had returned, and accordingly, they will give you response that please, ma'am or sir, wait for 24 hours, 42 hours, 3 to 5 business day. It will reflect in your account, right? So if we have any questions related to our SIM, our products, we contact the respective call center. And the same happens with the medical information contact center. As the name suggests, it's a contact center or a call center where we provide the information related to the medicinal product. Let me give you another example for your better understanding.
You all know about Johnson's and Johnson's, a very huge pharmaceutical company. Are you all aware of the Johnson's and Johnson's, J&J? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So as we all know that Johnson's and Johnson's is a huge pharmaceutical company. They have a wide range of products. Now I have purchased a moisturizing cream for my baby. Okay. Now being a mother, I just don't want my kid or my child to use a high amount of preservatives. Okay. And as we all know that in most of our pharmaceutical products, be it a moisturizer or anything, we do have some amount of preservatives in it. What I will do, I'll check the backside of the moisturizer. All the ingredients will be present, right? They have added this, that, glycerin, so many other things. Preservative is also mentioned, but I want to know the quantity or the content of preservative which is present inside the moisturizer, but that is not present. So what I will do, the first thing which I'll do is either I can go to their website, www.johnsonsandjohnsons.com. Once you go to their website, they will show their different products. You will click on that particular product and you'll be able to see that 0.3% of preservative is present inside that moisturizer. Now it is up to me whether I want to continue using that product or I want to go to a different pharmaceutical company. Now, for example, if the same thing happens to my mom or your mom, so they will not log into websites, right? They are not used to websites. So either what they will do is they will email Johnson's and Johnson's that, dear team, I am using this product of yours for my baby. And as a mother, I don't want my baby to use a high amount of preservative. The content or the percent of preservative is not mentioned in your product. Would you be able to tell me what is the exact percentage of preservative which you have used in this particular moisturizer? And you will get the reply on email. Now, my mom is not acquainted with this email as well. So what she will do, she will just check the number at the backside of the product. You will always see a toll-free number at the backside of the product. What she will do, she will just call that number. She will get connected to the call center of Johnson's and Johnson's. A person will assist my mom. They will ask what product my mom is talking about because they have a wide variety of products. She will say that I'm using this moisturizer and I want to know the percentage of preservative which you have used. Now, the Johnson's and Johnson's call agent executive, they will check their system or the information which they have with them, and they will inform that, ma'am, we have used 0.3% of preservative in this medication. So just like we had contacted Amazon, we had contacted Vodafone, just like that, now we have contacted Johnson's and Johnson's because we had a question related to the medicinal product. Now, even if it's a moisturizer, it is a medicinal product, right? So I just want to know that whether the medication contains how much amount of preservative. I called them and I got my response, and we will disconnect the call. So this is all in all what we do in medical information contact center. Now, most of the people who are not a part of MICC, and I know that there is very less information which is available about the MICC over the internet, people do think that in MICC we only take calls. No, it's not only about calls, guys. It's any form of it can be any source, be it website. If someone is asking us questions related to our medicinal product via website, we will give them answers. If someone is contacting us via email, we are responsible to reply them back with the correct information. If someone wants to contact us via fax, we are responsible to reply them. If someone is calling us via call, we are responsible to receive that call and give them the correct information. Sometimes people do ask questions on Twitter or any other social media site. You would have seen like people are tagging Zomato or any other pharmaceutical company. Dear Cipla, I am using this product of yours. I'm not getting much benefit from this. Anything. Nowadays, people are so much on social media. So they might ask questions on social media as well. So if they have any questions, if they have asked any questions related to our product, our client product, we are responsible to reply them on social media as well. So MICC is not only about calls, but yes, as compared to emails, as compared to websites, as compared to fax or social media, the number of questions or queries which we are getting is high in calls, as I mentioned.
We all are very much acquainted with websites, emails. Our moms or our grandparents, they are not. If they have any question, they'll directly call, right? The same is with other people as well. So the number of queries which we get via call is high as compared to emails, fax, social media, or any other source. But it's not mean that we only handle calls in medical information contact center. Now, I just gave you a brief idea what we do in MICC, but let me just tell you that it is more than that. We are not only here to tell other or consumers that how much of percentage of preservative we have used. No, it is more than that. So let us begin with the MICC. What is MICC? As I mentioned, what briefly we are doing in MICC. Now, what is the importance of MICC in pharmacovigilance? Now, I will not go in detail what pharmacovigilance is, how many projects we do get in pharmacovigilance. I am just here to discuss about MICC, and I just want you guys to understand what MICC is. Now, MICC is an integral part of pharmacovigilance. Why it is a very important and integral part of pharmacovigilance? Because MICC executives are the first point of contact with the patients, healthcare professionals, or other stakeholders. Now, I am saying that we are the first point of contact? Now, for example, I'm working for Cipla. Cipla is also again a huge pharmaceutical company. They have a wide variety of products. Now, if someone has any questions related to Cipla products, they will contact the medical information call center. We are the first point of contact with the patients, with the healthcare professionals. Healthcare professional means a pharmacist, a nurse, a prescriber, a doctor, anyone who is in the field of healthcare or other stakeholders. For example, I have a company, I want to purchase Cipla products and I want to distribute it, right? I don't have any contact number of Cipla, so I will contact the MICC that I am having this distributor company. I want to purchase Cipla products. So how should I go about that? For patients, before starting with the Cipla tablets, they will just call us and ask us that I'm very allergic to gluten. I just want to know whether this tablet of yours contains any gluten in it or not. Also, I have some religious belief and I can't go with animal content. I just want to know whether your tablets have any kind of animal content in it or not. Sometimes some doctors will call you. They will ask you that I have got this product of yours, which is a tablet. I want to give it to a 2-year old child. I want to know whether I can break this tablet or not. I want to know whether we should give it before food or after food. I want to know whether I need to give it with lukewarm water or normal water. So many other kind of questions. So we are the first point of contact with the patients, healthcare professionals, other stakeholders. Patient will not call the manufacturer company. Patient will not call the director of that company. Patient will not call those persons who manufactured that product. Patient will call us, and we are responsible to provide the correct information. I'm again and again I'm emphasizing on the word correct information. Now I'm using this, I'll tell you a bit later. Also, why MICC is important? Because as I mentioned, we are the first point of contact for the patients, HCPs, or other stakeholders. We are also responsible to build a good profile or the good impression of the company. For example, I'm working for Cipla. I got a call and someone is asking me that can I break this tablet and take? I will say that, oh, I don't know, please connect with the doctor. I will not receive or I will not handle that caller properly. So what they will do is they will have a very bad impression that, oh, Cipla company is not good. Well, I am not from Cipla. I am just working for Cipla. But for them, I am a part of Cipla because I have received their call. Now it becomes my responsibility to handle and to receive the caller very well. It is my responsibility to give them the correct information, because if I don't, they will have a very bad impression about Cipla. They will go to 10 other people and they will say that don't purchase any medicines from Cipla because their call center is very bad. They did not help me. So we are the first point of contact. We are building a good profile of the manufacturer company.
right? So that is why MICC is a very integral part of pharmacovigilance, because we are the first point of contact with the patients, HCPs, and stakeholders, and we provide supports to patients. We provide support to healthcare professionals. We provide support to other stakeholders if they have any questions related to our client product. Now, client product means I might be working for Cipla. I might be working for Johnson's and Johnson's. For example, IQVIA. You all must be aware of IQVIA. So they have so many other projects. They are handling calls and they are handling projects for Cipla. They are handling calls and projects for Johnson's and Johnson's and Sun Pharmaceuticals and so many other pharmaceutical companies. So if I am working for Cipla, Cipla is my client. And whatever calls I will receive for Cipla products, I am responsible to answer those questions. Till now, do you guys have any questions or any confusions? No, ma'am. All right. All right. What is MICC? Just like as I mentioned, we can contact Amazon, Flipkart, and we share our questions related to our products. And similarly, just like they resolve our issues, we are also doing the same in MICC, but we are not giving any information about the cloth which you purchased, about the SIM card. We are giving information about the medicinal products. Now, a question comes to each one of our mind, that what is the difference between MICC and a normal call center? In normal call center also, they are getting calls, they are resolving their queries, and in MICC also we are getting calls and we are also giving them the response. What is the difference between MICC and a normal call center? Now let me just tell you guys that here in MICC we are dealing with the life of a patient. We are not dealing with any SIM card or cloth or refund or anything else. We are dealing with the life of a patient. Let me just give you a very small example. As you all know that there are so many persons who are allergic to gluten, who are allergic to lactose, who are allergic to any other products. And if by chance they will take anything, be it a food or medicine, which is having gluten in it, they'll get they'll get a very serious reaction on their body, which might lead to hospitalization as well. So if someone is calling me and asking me that, ma'am, I am allergic to gluten, I have got this tablet of yours, which is a paracetamol tablet, for example. I just want to make sure that this is gluten free. Now I'll check the information, whatever is there. The product is not gluten free. Okay. The information which is present with me, it is mentioned the product, the paracetamol tablet is not gluten free. But I just thought that, oh, it's a very small question. I did not look at the information correctly. And I mentioned that, no, no, ma'am, it is gluten free. You can take it. But in reality, the product is not gluten free. What will happen? The consumer will take the medication which contains gluten. The consumer is allergic to gluten. As soon as the consumer will take it, he or she will get a very severe allergic reaction, and it might lead to hospitalization or even death of the patient, because we are not aware the medical conditions of the patient. The patient might have 100 number of other medical conditions, and on top of that, he took a medication which is not free from gluten. He will get a medical reaction, I mean allergic reaction, and it might lead to death as well. So can you see the criticality of this role, the criticality of being in MICC, and the difference between MICC and BPO? It is not the same with Amazon, Flipkart, Vodafone. They might be handling questions related to their product, SIM card, refund, or orders, but they are not dealing with the life of a patient. And that is the major difference between MICC and other call centers and BPO. So if you are working in MICC, you need to be proud of yourself and you need to know the criticality of this job, that one wrong information might lead to a serious condition and even death of a patient. That is why I was telling you previously that whenever you're giving information, give the correct information.
Now you have provided the incorrect information. Now after 2 hours, you will see that, oh, I have provided the wrong information. Let me just call back that consumer and tell that, ma'am, I'm sorry, I provided you the incorrect information. By the time you will call, that person might be in the hospital or might would have got a serious adverse reaction. It will come to you. It will come to the reputation of the company, or the person might do a legal case against the company. Even though the company is not responsible for this mistake, you are responsible for that mistake. You are dealing with the life of a patient. Now, being an MICC executive, we are the first point of contact with the patient. We are responsible for taking all the required information from the caller, which then goes for further processing. Now, what do I mean by further processing? You guys would be knowing about different projects or different fields of pharmacovigilance, be it case processing, be it regulatory, be it labels or something. So once we take the information, we put it inside a form, then we send it to other projects like case processing, then it goes to case processing, then it goes to regulatory submission or whatever it is. We are the first point of contact. Now, all the collected information, what do I mean by collected information? Let me just give you an example. I received a call today about paracetamol tablets, which is manufactured by Cipla. I will tell them that, ma'am, how may I help you? She is asking about the gluten content in the medication. Before I proceed ahead, I will ask her name. I will ask her telephone number. If she wants to give the email address, fine. If not, it's completely fine. I will ask the full product name. For example, I have a product which is available in capsules as well as in tablet forms. I will ask her, ma'am, are you using the tablet or the tablet form? She will mention that, no, I'm using it in tablet form. What is the strength? She will say it's 25 milligrams. I will go to the information which is present inside me and inside my system, and I'll ask or I'll see that, ma'am, it does not contain gluten or it does contain gluten. But before giving any information, we need to collect the information. Why we need to collect the information? I'll tell you in next slides. So all I want to say is MICC professionals are the most important part of pharmacovigilance. They represent the manufacturing company, and even more than that, we are dealing with the life of a patient. And that is the major difference between MICC and other call centers. Any questions till now? No, ma'am. No, ma'am. Now, how and why consumer contact us? As I mentioned, whenever you get any medicinal product, if you look at the backside of the product, you will see so many contents, warnings, the common side effects which you might get after taking the medication. What are the ingredients? Sometimes they'll mention the percentage of ingredients which is there inside the medication. Who is the manufacturing company? At the end, they'll mention Sun Pharma, manufactured by Cipla, manufactured by J&J, manufactured by Cipla, and they will also have the toll-free number, which we get in most of the products, be it medicinal product or any other product. So toll-free number will also be mentioned at the backside of the medication. If someone has any question, they will check the backside of the label and they will call us. Sometimes they mention their email address. If someone wants to contact us via email, they will contact us. Now, is MICC is only about giving the information? That, ma'am, it contains gluten, ma'am, do not break the tablet, ma'am, take it like that, ma'am, don't take it with lukewarm water. Is it only about this? No. MICC is more than that. For example, you took a medication, and after taking the medication, you got rashes all over your body. Okay. And it's a medication which is manufactured by Cipla. So what you will do? You will contact your doctor, right? That, sir, I took this medication and I got rashes all over my body. Now, what your doctor will do? He will contact the respective manufacturer company. He will call the toll-free number. He'll get connected to the MICC executive, and he will say that, oh, I gave this tablet of yours to one of my patients, and after taking the medication, the person got rashes all over his or her body. Okay. Now,
why it is important to report this kind of side effects, and how do we get such kind of reports? Now, first of all, I just want to give you a brief idea that whenever a manufacturer company, they make any kind of medicine, so they do the clinical trials, right? They'll have a set of people, 10, 20, 100, 200, 500, 1000. They will try those medications on them. And after proper study, they'll get to know that, oh, we did the trials on about 500 people, and we got to know that out of 500 people, about 300 people got rashes in their body. So Hello, rashes, ma'am. Sorry to interrupt, but slides are not moving. If you are on first slide. is it the same with everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it fine now? Can you see my screen and slides? No, ma'am. Screen is not visible now. How about now? Yes, ma'am. Now it's visible. Now different slides are coming, right? Yes. Yes. Okay. So I was just talking about how and why consumer contact us. I just informed you that if they're using any kind of medicine, and they'll check the backside of the label. Whenever you see the backside of the label, there will be different contents about the ingredients, who manufactured that medication, what is the toll-free number, what is the email ID, even what is the website. They'll call on the toll-free number, which is present in the medication box, and they will get connected to us. Now, if they have any questions, for example, if they want to know whether I can take it with lukewarm water, whether I can break it, what is the content, and whether gluten is present in or not, it is called as medical information. It means they're asking questions or information on the medicinal product. Now, if they are saying that as soon as I took your product, I got rashes all over my body, it means the person got the side effect. Now, the side effect is called as adverse event. Okay. Some people might call us and tell you that I received your medication box today. It is completely sealed, but as soon as I opened the box, I saw that all the tablets are broken or in powder form. Or as soon as I opened the box, I saw that some tablets are white in color, some tablets are black in color, some tablets have brown color. Or some, as soon as I opened your bottle, I saw that there is a very bad smell which is coming out of your medication. I am using your medication from last 5 years, but this is the first time that this peculiar smell has been coming from your medication. Is there something wrong? So we are, or the consumers are, complaining about the quality of the product, that it's broken, the colors are different, it's smelling bad. So that will come under PQC, product quality complaint. So in MICC, all in all, we mostly get three kind of calls. First is medical information, where they are just asking about the information: gluten content, animal content, breaking the tablet, can I take it with lukewarm water, questions like that. PQC, where they are complaining about the quality of the medication. PQC means product quality complaint.
oh, it's very bad smelling, the tablets are broken, the capsules were opened, it was broken or something like that. If they are complaining about the quality of the medication, it will come under PQC. And if they are mentioning that I got side effect after taking your product, it will go under adverse event. And depending upon the case type, we will procure all the required information. Now, what is all the required information? As you all know that I was mentioning few moments back, that whenever a manufacturer company, eh, they develop any kind of medicine, they do the clinical trials, right? But they do the clinical trials on very specific population, maybe 10 number of people, 20 number of people, or 500 number of people. When they did the clinical trial, they got to know that out of 500 people, 300 people are getting rashes on their body when they are taking the medication. But it's not fatal. It means after getting the rashes on the body, people are not getting hospitalized. It's not that serious. So rashes is a very common side effect. So what they will do is they will just mention on the medication label that note or warning, you might get rashes after taking this medication. If you will get, please connect with your doctor. For example, for all the cough syrups, it has alcohol content in it, right? So all the um, cough syrup manufacturing company, most of the company, what will do, they will do is that on the label, on the backside of the label, they'll just mention as warning that you might feel sleepy after taking the medication, right? So all this they'll get to know in the clinical trials. So now clinical trial is over. They got the green tick for their medication, and now the medication is marketed in a very big market. Now the product is launched into the market. Once the product is launched into the market, that is when the real test of the medication comes. Now, in the clinical trial, the manufacturer company had got 500 people. He tested that medication on those 500 people. He got to know that, oh, rashes is the most common side effect, sleepiness is the most common side effect. But now, this product, which is launched, will be used by thousands to thousands and lakh number of people. Now, those lakh number of people have different medical conditions and they might react differently to the same medication. Let me just give you an example. I myself, for example, as we all know that the cough syrup, they have alcohol content in it, not right? Most of the people feel sleepy after taking the medication. I myself, I don't feel sleepy, but I'll start shaking after taking cough syrup because it doesn't suits me. The same thing happens to one of my friend. Other friends of mine, they might feel sleepy, and there are other persons who don't feel anything after taking the medication or the cough syrup. So now you see that the same cough syrup is reacting differently on different body, because I might be having some underlying medical conditions. Because of that, I am, whenever I'm taking a cough syrup, I'm my whole body starts shaking. A different person is reacting differently to that medication, and some other person might react differently. So now when the product is launched into the market, it will be used by lakhs and lakhs of people who have different medical conditions, and they will react differently to the same medication. And now the real tests comes. Now the manufacturer company wants to see that, okay, now my product is launched, it will be used by lakh number of people. Now let me see what kind of reactions people are getting from my medication. For example, we are getting thousand number of calls in a day where people are saying that as soon as I took your cough syrup, I vomited. And out of thousand, we got to know, out of thousand patients, we got to know that maybe 900 people are doing same, but it's not serious. So we will tell the same to the manufacturer company that this is what we are getting the calls, that people are vomiting after taking a product. Now they will submit it to FDA, they will do their internal things, and then they will get to know that vomiting is also one of the most common side effects. Now they will update their label. Earlier they had mentioned that after taking a cough syrup you might feel sleepy, but now they have also updated that you might vomit also, which is a common side effect. If you do, please connect with your doctor. Okay. Now how manufacturer company will get to know that a person in Pennsylvania in USA
took my medication and he got rashes in my body, how a manufacturer company will get to know? They will get to know via MICC, Medical Information Contact Center. I received the product, I got rashes. What I will do, I will call the manufacturer company, or I will call my doctor. The doctor, you gave me this medication, I am having rashes. Now, doctor, what they will do, because he's a healthcare professional and he's aware of all such process which goes in pharmacovigilance MICC, he will call the manufacturer company. That see, I gave this medication, person is getting rashes. Or sometimes consumer directly calls us that I got rashes from your medication. What is there you have used in your medication? In such case, whenever we are getting the side effect or AE calls, adverse event calls, what do we need to ask? Can we say that, ma'am, yes, rashes is a very common side effect, and shall we disconnect the call? No. Reporting side effect is important, and we are the persons who are responsible for taking all the required information. Now, what are the required information which you need to take for adverse event? Number one, name of the caller. You must be aware about the four valid criteria in PV. Are you guys aware of that? Yes, ma'am. So number one, an identifiable reporter. The reporter or the person who is calling us should be identifiable. How you will identify a person? By his or her name. Sometimes people in America, they will not share the name. They will give their initials. For example, if your name is Reena Singh, they'll say RS. Even if they're sharing your initials, it's completely fine. It should be identifiable. The reporter should be identifiable. You will ask name, you will ask their telephone number, you will ask their email address. If they want to provide, it's fine, but you need to ask to make the case valid. Can you see, we are the most important person, because if I will not ask that, oh, I'll not ask, I'll just give the information, I'll disconnect the call, the whole case will become invalid because the MICC executive did not ask any of the questions. So to make the case valid, first ask the patient identifiers, name, telephone number, email address, that is it. Identifiable reporter. Now I am working for Cipla. Cipla has wide variety of products. I will ask, ma'am, what exactly the product which you are using? She'll say, oh, I'm using paracetamol tablets. Okay, ma'am. Could you please confirm the manufacturer name? Sometimes people, what they do is they are using Johnson's and Johnson's product, but instead of calling Johnson's and Johnson's, they are calling Cipla. Now, I am not responsible for taking any information for Johnson's and Johnson's. I am working for Cipla. Only if I'm getting calls for Cipla products, I will take it. So I will ask, ma'am, can you please check whether it is manufactured by Cipla? She'll say, no, it is mentioned J&J. So I'll say, ma'am, this is Cipla. You have reached the medical information contact center of Cipla. Please go and call the J&J contact center. Now they'll say, no, it is mentioned as Cipla. Okay. If it is my manufacturer company, I will take all the information. I will ask, ma'am, what exactly did you got the reaction? She'll say that as soon as I took your medication, I got rashes. Where exactly did you got the rashes? She'll say that on my back, on my shoulders, and on some part of my arms, but not on my face. It is required. It is required for us to know. It is required for the manufacturer company to know where exactly they got rashes. Ask where exactly you got rashes. Apart from rashes, did you got anything? She'll say, no, I did not got anything else, but I was feeling nauseous. I just wanted to vomit. I was feeling nauseous. Okay. When exactly did you started using our product? Oh, just today morning I started. At what time you took the medication? Oh, at 10 o'clock in the morning I took your medication, and within 15 minutes I got the reaction. It is very important to ask within how much time they got the reaction, because sometimes what happens is a person might be using 100 number of tablets or 100 number of medications. So we are not sure that whether she got rashes because of Cipla medications or because of some other medications which she's using. So we will ask that within how much time you got this reaction. Are you using any other medications apart from this? She'll say that, yeah, I'm using this. Take all the information about the medicines which the person is taking. Do you have any medical conditions, ma'am? Like, do you have high blood pressure? Do you have diabetes? If they'll say yes,
take down the information. If they'll say no, well and good, no issues. Ma'am, is this the first time you are using Cipla medication? Yes, I am using. Ma'am, for what reason you are using this medication? Sometimes what happens is we have manufactured a product for cough, but people are not using it for cough. People are using it for some other reasons. If someone is using for some other reason, then it's their mistake. We have manufactured this medication for cough. Why are you using for something else? So we need to ask for what reason you are using these medications. What is your height? What is your weight? What is your date of birth? Because age also it plays a very important role in the reactions, right? So all such informations we will ask in AE, adverse event. And when you are working in MICC, you will get a form, right? You will get a form. Everything will be mentioned. Name, just like we fill out any other form, name will be mentioned, email ID, telephone number, fax number, email address, their mailing address, their house address, the product name, how many times they were using, 2 times a day, 3 times a day, and when exactly did they started using, after how much time they got the reaction, what is the reaction which they got, did they connect it with their doctor or not. You'll ask, ma'am, did you connect it with the doctor? She'll say, no, I did not connect it with my doctor, but I wanted to report it to you guys because you have manufactured this medication. So you will tell them that, ma'am, I have made a note of this, thank you for reporting, but I would request you to please connect with your doctor. Because if a person has got rashes or any other kind of side effect, we will take it down, but we will not tell them that, ma'am, please don't bath for 2 days or 3 days, it will subside. We are not the one who will give the medical judgment. All we are here is to take down all the information, and we will refer them to their doctors. And all the required information you will take and you will just fill out in a form. You will get different forms, a different form for AE, different form for PQC, and different form for MI. And that is how you should report and you should document AE. You need to make sure that you are taking all the valid criteria to make the case valid. And once you fill out that form, you will send it to your client. Now, client will submit it to the FDA within a required timeline. Whenever we are getting any adverse event, there is a specific timeline. Manufacturer company, if they are getting any kind of side effect report, they need to submit it to the FDA within maybe 7 calendar days or 15 calendar days, or even before that. There's a specific timeline for that, and we are responsible for taking all the information. If you'll think that, oh, the person might got reaction, let it be, I'll just ask them to connect with their doctor, I will not ask any other required information, then we are not making that case valid. And if we are not making that case valid, we will not be able to process it further. All the information which we are taking, it will go for case processing, it will go for regulatory submission, it will go to other projects of PV or pharmacovigilance, but it all starts with MICC. So you know the criticality, we are the first point of contact, we are responsible for taking all the information. And whenever we are handling calls for adverse events, it is our responsibility to take that call very nicely. For example, you are very lazy, you'll ask them very rudely, please give me your name, please give me your telephone number. That person will not feel good, he will disconnect the call. And no matter how many times you will call that person back, he will not receive. So you have lost that caller, you have lost the information there, and the case becomes invalid. So it is your responsibility to take down all the information. It is your responsibility to handle that caller nicely. It is your information, it is your responsibility to refer that consumer to the doctor. Or if any other information is required, you need to provide it to them. And if you make the case valid, the more information you will get take in the call, the more helpful it will become in the next process of pharmacovigilance, be it case processing, be it regulatory submission. But it all starts with the MICC executive. So that is all about EE, how you need to handle it, how you need to take the information. Any questions for calls, how to handle AE calls? Any questions till now?
Okay. I have one question. If I am getting one call, or you guys are getting a call in MICC, person is asking that I got, I just want to know whether this product contains any animal content in it or not. So, what is the case category for this? Is it MI, medical information? Is it product quality complaint? Is it adverse event? Medical information. And if someone is telling that I took your medication and I vomited twice, what is the category? Adverse effect. Right. Now, what is an adverse event? I'll just. Is my screen still visible? Can you see the slides which I'm changing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. As I mentioned few moments back, if consumers have used the product, they got the rashes on their bodies, is just an example. So what you'll need to ask is, am I audible? Yes, ma'am. Okay. You need to ask the patient or reporter name or identifiers. You need to ask about the information about the event. If they are saying rashes, where they exactly got the rashes. If they're saying vomiting, how many times they did the vomiting. Kadambari, are you asking something? Okay. You need to ask the patient name or identifiers. You need to ask about the event which has been occurred to the patient. If it's rashes, how many times, this, that. Information about the medicine which they were using. Now, Cipla has a wide variety of products. You need to ask what exactly the product they were using. And other important health related questions, like if they have any medical conditions, if they are using any other medicines or not. All such information you need to take down, and you need to fill out the form which you will get. Now, what is a PQC? A product quality complaint. As I mentioned earlier, sometimes you will get the medication and you will see that all the tablets are broken, just like it is showing in this picture. Sometimes you will open a sealed bottle, but as soon as you will open, you will see that, oh, all the tablets are brown in color. It should not be brown in color. I'm using this medication from last 5 years. This medication was white in color, but it is now brown and it is smelling bad as well. It means there is something wrong. I got the medication and I saw that the seal is opened, and you should not use any medication with open seal, right? So that is also a product quality complaint. Now, in a product quality complaint, what questions you need to ask? Just like in the adverse event, I told you, you need to ask the patient name, the medication name, about the side effect which they got, other important questions you need to ask. What are the important questions you will ask for product quality complaint? Number one, name, telephone number, email address, all such is required. Number two, you will ask the product name. Number three, you will ask the batch details. Whenever any manufacturer company, they are manufacturing the medications in their plant, they will put the batch details and they will have all the information about that batch on their records. They'll put the batch number, they will put the lot number, they will put the serial number, they will put the barcode number, and they will also put the NDC number. NDC number is a very important number when it comes to MICC. NDC number is National Drug Code. National Drug Code is a unique code for the medicine. If someone is using Cipla paracetamol, the NDC number would be 123456. If the same paracetamol, which is manufactured by J&J, they will have a different NDC number. Okay.
So the NDC number is a specific number for a particular product. If someone is calling me, they are saying that Hello, I'm ma'am. using. Again, same problem. Slides are not moving. Okay, I'll just share it again. Is it fine now? Yes. Okay. So as I was mentioning about the NDC number, the National Drug Code number, sometimes a person might say, I'm using paracetamol. Now, paracetamol is manufactured by so many manufacturer company. How you will get to know that it is manufactured by Cipla? Because you are working for Cipla. You don't have anything to do with other manufacturer company. You will ask them, please provide the NDC number, National Drug Code number. They will check the backside of the product. They will provide you the NDC number. You will check that, okay, this product belongs to Cipla. Why batch details is important? For example, someone is saying that I got your medication, I got injection vial, and I see that something is floating inside that injection vial. Some insect is floating, which is a very huge product quality complaint. What you will ask? You will ask the NDC number, National Drug Code number, just to make sure that this is your product, this is Cipla product. You will ask the batch details that, ma'am, please provide the lot number. They will provide you the lot number. They will provide you the barcode number. They will provide you the expiration date or the manufacturing date, which is mentioned on the backside of the label. Now, why batch details are important? You guys must have seen sometimes in the news that this particular medicine of Cipla or this particular medicine of a manufacturer company is recalled or is banned uh, on the market. Why it is so? Because once or if a manufacturer company is getting so many complaints about a particular product, it will go to the FDA or the regulatory bodies of that country. They will check that, okay, for this product there are so many people who is complaining that there is something inside the vial. Everyone is getting some kind of insect, and it should be sterile. Instead of being sterile, they are getting some insect inside the bottle. There is something wrong with this batch. So what they will do, they will stop that batch in the market. They'll stop marketing that batch to the market, because a product quality complaint is a huge complaint. If someone will take that vial, which is having an insect inside it, and if someone will use it, they will get a serious side effect or it might lead to death. So product quality complaint is a huge complaint, and as soon as we get this information, we need to ask the batch details. Because as I mentioned, in the manufacturing plant, they will manufacture the product batch wise. Okay, if someone is having a particular complaint about a particular batch, we will see that, okay, only for this particular batch we are getting so many calls. It means there is something wrong with that particular batch. So we will recall. It means we will ask all the pharmacies, all the persons or the marketing authorization that please stop using this thing. Please stop using this particular batch. You must have heard about the controversy about Maggie. There was a content which was high. People were complaining about it. It got banned for few days or few months. Maggie did all the testings and they again came back. So this is how it happens. But if someone is complaining you about a product quality complaint, you need to ask the NDC number. You need to ask the batch details. You will have a form. You will update that form. What kind of complaint they are making? Is it about smell? Is it about color? Is it about seal? Is it about something else? Just mention it and you need to submit it, okay, to your client. So that is how you handle a product quality complaint. I have one question for, okay. If I am calling and asking you that I got this medication, it is mentioned that do not take this product if it is not sealed.
But as soon as I got the medication, I saw that the medication is not sealed and it is smelling very badly. What is the category of this case? Pro- Quality. Product quality. Quantity. Okay. Ashwini, what questions you will ask if you are getting a complaint about the quality of the medication? So, what is the color of the product? What are the essence of the product? There's the seal, which was contains the medications are proper or not, batch number, and Right, right. All such informations are important. Right. You're right, Ashwini. Triveni, thank you, could ma'am. you please help me? What is this NDC number, which I was talking a few moments back? You there, Triveni? I can see she's here. It's okay if you don't know the answer, just tell me that, please, ma'am. You please share it one more time. But are you aware what is NDC? I was just talking about a few moments back. Yes, I'm asking. Yes. What is NDC number? National Drug Code. National drug code number means it is written on the back side of the product. Yes. And is it same for all the products, all the medicinal products? No, ma'am, it is different from the means it is different from different batches. It varies. Right. Not the different batches, but if I am producing paracetamol, I will have a different NDC number. If someone else is manufacturing paracetamol, they will have a different NDC number. Just like you get the order number for the order which you make, your order number will be different. Someone else's order number will be different. That is the same with the National Drug Code NDC number. Okay. Okay, ma'am. Rohit, thank you, Triveni. You are right. Rohit, if you are getting any question where the person is asking that I am, due to my religious belief, I don't want to take pork, or the pig, I don't have pig, or I just can't have pig because of my religious restrictions. I am taking your paracetamol tablets. Does it contain any pig content in it or not? So, what questions will you ask that consumer? Or you will just say that, don't call us, I'm sleeping. Rohit, are you there? Okay, I'll ask the same question to Revati. One second question फिर से बताएं. हाँ, कोई किसी ने आपको फोन किया और वो जस्ट पूछ रहे हैं कि मैं पिग जो है पिग कंटेंट में नहीं ले सकती, मेरे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपका मैं मेडिकेशन ले रही हूँ पैरासिटामोल टैबलेट्स, इसमें पिग कंटेंट है क्या, ये क्वेश्चन है उसका. तो आप उसे क्या इंफॉर्मेशन लोगे? आप अपना इंफॉर्मेशन तो दोगे, दैट इज फॉर श्योर, बट इंफॉर्मेशन देने से पहले आप कंज्यूमर के कुछ डिटेल्स लोगे. कौन कौन से डिटेल्स आप लोगे? नाम पूछोगे कंज्यूमर का, राइट? Yes, yes. टेलीफोन नंबर लोगे, ईमेल Yes. आईडी देना चाहें तो लोगे. वो डिसीज मतलब वो कौन किससे वो सफर कर रहा है. हाँ, मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए वो किस चीज से सफर कर रहे हैं पूछने की जरूरत नहीं. आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, राइट? अगर वो साइड इफेक्ट बता रहे हैं तब आप उस वो लंबे प्रोसेस में जाओगे.
किस चीज के लिए आप दवाई ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कब ले रहे थे, रिएक्शन कब हुआ, और कुछ मेडिसिन ले रहे हो कि नहीं। अगर वो सिंपल पूछ रहा है कि बता दो भाई पिग कंटेंट है कि नहीं, उसको जस्ट पूछो नाम, पता, कहाँ से बोल रहे हैं। अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो भाई उनकी मर्जी। कौन सा मेडिकेशन ले रहे हो, कौन सी स्ट्रेंथ के ले रहे थे, क्योंकि मेडिकेशन का नाम भी तो पता होना चाहिए ना मुझे। तो मेडिकेशन का नाम मैं लूंगी, अपने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा उस इंफॉर्मेशन में मैं देख के बताऊंगी कि मैम इसमें पिग कंटेंट हमने नहीं डाला है, सब नेचुरल सोर्सेज डाले हैं और प्लांट बेस्ड सोर्सेज डाले हैं, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, जैसे कि अमेजन में भी कॉल करते हो तो नाम, रजिस्टर्ड फोन नंबर, ये सब पूछते हैं ना, तो ये सब आपको पूछना है। मेडिकेशन का नाम भी पूछ लो कि फुल मेडिकेशन नाम बता दो। और मैन्युफैक्चरर कौन है, वो बोलेगी मैन्युफैक्चरर तो सन फार्मा है, तो उसको बोलो कि हम सन फार्मा नहीं है भाई, हम तो सिप्ला के लिए काम कर रहे हैं, सन फार्मा वालों को कॉल करो। आपको पता होना चाहिए ना। आपने अमेजन से कुछ प्रोडक्ट खरीदा, आप जाके फ्लिपकार्ट को कॉल कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट वाले तो बोलेंगे ना कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, अमेजन वालों को कॉल करो। तो सेम थिंग, अगर सिप्ला का प्रोडक्ट है तो आपको बस मेक श्योर होना है कि ये जो मेडिकेशन का नाम बोल रही है वो मेरा ही प्रोडक्ट है, मेरे क्लाइंट का प्रोडक्ट है तो ठीक है, उसको फिर इंफॉर्मेशन दे दो। ठीक है। So I'll ask such questions in between, and please do answer such questions because this session is for you guys. Before I proceed ahead, I just want to tell you guys that MICC is flourishing in the PV field like anything. MICC बहुत develop हो रहा है और बहुत सारे there is nothing new which I'm saying to you. You guys must be knowing and seeing that all over on the बहुत सारी vacancies हैं. There are so many vacancies about MICC. And let me just tell you an inside thing that more than case processing or any other projects of pharmacovigilance, you will get more salary in MICC. So salary और जो package है MICC में वो ज़्यादा है as compared to other projects of PV. I just forget to tell you that I'm in this field for about 4 years. I started my career in this MICC, and I did got opportunities in other projects, but I refused to change my field. मुझे case processing, क्योंकि आजकल people are like running behind case processing. I didn't wanted to do that job क्योंकि मुझे I have gained a good amount of experience in MICC, and what I can see in the market nowadays, MICC is flourishing. So मैं क्यों case processing में जाऊँ when I'm getting everything, a good salary, a good reputation, a good position as well. So people are coming back to MICC. Number one, no, there is nothing new that we all are doing job for our bread and butter. We all need a good amount of salary. And if someone is getting good amount of salary in MICC, they will refuse to go to any other project. Career growth is very nice and there's so many vacancies. पहले MICC बहुत कम कंपनीज के पास थे, आजकल MICC हर एक मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है सेटअप कर रही है. So if you pay a little bit of attention to this session, to this PPT, you'll be more, I mean, you'll be benefited from this because there is very less information which is available about MICC on over the internet. So there is good salary, good position, good career, और बहुत आपको, you can have a work-life balance. But I'm not saying anything against about the other projects. But what I'm saying, I have seen other people who are in the field of case processing, regulatory, and they're working all the day. उनका कोई time limit नहीं है. MICC में ऐसा नहीं है. You log in, you take calls, you get MI, TQC, AE, information ले लो, form submit कर दो, हो गया काम खत्म. उसके बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. You are getting good amount of salary as well. Nowadays, MICC people लोगों को work from home दे रहे हैं permanent because we work in shifts. So they don't want us to come to office and do the work. It's been more than 2 years I am doing work from home. And because I have gained some amount of experience, it might be permanent work from home for me. Being a woman, and it's not about gender specific, but I am enjoying this job. And I just want you guys to नो एटलीस्ट अगर थोड़ा सा भी आपको पता चल जाएगा अबाउट MICC, you are sure to get a job. And I think MICC, you should be a part of MICC because you will get a good work-life balance and a good amount of salary. So I'll again continue with my slide. Hello, ma'am.
Yes, hi Nilima. Yes, my question is, yeah, if you get all means you get any information, maybe it's MI or PQC, then you fill up the form, and then it is document. It is a document, and then what will be the next process where you submit that information? It is a software or where you have to submit. Good question, Nilima. So I'll tell you that there are so many clients who just want you to put that information in a form. Just like you fill out that form, no, आप फॉर्म भरते हो ना, हाथ से कभी कभी भरते हो, तो वही सेम आपको जो है कंप्यूटर में दे दिया जाएगा. It will be showing name, telephone number, this everything. You will be updating it manually. But there are some other clients who don't want you to use a manual form. There will be a website or a software. What you will do is there will be different tabs. Name ka tab aayega, you will update the name, and then uh, product ka name tab aayega, you will click the product. There will be other information. Reaction ka tab aayega, you will just mention rashes. So there will be different tabs if you are using any kind of software. और there will be फॉर्म जैसे आप भरते हो, हाथ से भरते हो, यहाँ पे आप कंप्यूटर में मैनुअली भरोगे. नेम वाज रीना शर्मा, एज वाज 72 years, this that. Once you submit the form, we cannot share it with the client directly. ठीक है, मैंने कोई कॉल लिया है, मैंने कॉल लिया, मैं कॉल रिकॉर्डिंग डाउनलोड करूंगी, कॉल रिकॉर्डिंग में सुनूंगी कि अच्छा ये हुआ कॉल में. आई विल अपडेट दैट फॉर्म. आई विल सेंड दिस फॉर्म टू माय क्वालिटी रिव्यूअर. क्वालिटी रिव्यूअर क्या करेगा, वो दोबारा से आपका कॉल सुनेगा और आपका फॉर्म देखेगा. He will check or she will check that everything, whatever you talk over the phone, और जो भी आपने information लिया, that is correctly filled or not. For example, in the call, the person is saying, my name is Reena, and in the form you have mentioned as Veena, REENA की जगह VEENA आपने भर दिया. नाम गलत हो गया ना. And नाम is a very important part. They provided their contact number is 1283. You have updated 2823. They told in the call that I got rashes only on my arms. You have mentioned they got rashes all over their body. So ये सब चीजें चेक करने के लिए क्वालिटी रिव्यूअर आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा और देखेगा फॉर्म कि ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन, वट एवर द इंफॉर्मेशन शी टुक ओवर द कॉल इज करेक्टली अपडेटेड ओवर द फॉर्म. नाउ जब वो चेक कर लेगा, then that quality reviewer will send that form to the client. Now client वो form देखेंगे, they will check that okay, for this product we have got this reaction. They will do their internal discussion, they will submit it to the FDA. That is their thing. But हमारा जॉब वहां पे खत्म हो जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि MICC में बस जिंदगी भर हम कॉल लेते रहेंगे. नहीं, MICC में जाने के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको और कॉल्स लेना नहीं पड़ेगा. आप क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस में आ जाओगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा. नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉल्स, यू विल चेक अदर कॉल्स. दूसरों ने जो कॉल लिया है उसको आप चेक करोगे. तो इस तरह से आपका पोजीशन भी बढ़ता जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू डू. यू टेक द कॉल, यू फिल आउट द फॉर्म. अगर फॉर्म नहीं भरना है तो टैब्स होंगे, टैब्स में आपको सेम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि टैब 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 करके आप जाते रहोगे. आप सबमिट कर दोगे, रिव्यूअर जो है वो देखेगा, क्वालिटी वाला, उसको लगेगा कि अगर फॉर्म सही है भेज देगा. अगर वो देखेगा कि नहीं फॉर्म में थोड़ी गलती है, वो ठीक करेगा और उसको भेजेगा. सो दैट इज द होल प्रोसेस. Thank you, ma'am. Ma'am, Priyadarshini is here. यस, हाय प्रियदर्शनी. हेलो मैम. मैम, क्या क्वालिटीज होना जरूरी है MICC में वर्क करने के लिए और कौन सी लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है? क्योंकि कॉल तो किसी भी लैंग्वेज में आ सकते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो. Right, good question, Priyadarshini. So I have made a slide about this, but I'll tell you here only. First of all, हम MICC में जो काम करते हैं, हम मोस्टली USA के लिए, अमेरिका के लिए, UK जैसे कि लंदन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, कनाडा हो गया, इन सब के लिए हम मोस्टली काम करते हैं जहां पर लोग इंग्लिश का यूज करते हैं. Now, apart from that, we might get, for example, सिप्ला जो है वो सिर्फ USA में प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो UK में प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो जापान में, चाइना में, कहाँ कहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचती है. तो जापान से अगर हमको कोई कॉल कर रहा है तो वो तो जापानीज में ही बात करेगा.
वो किस तरह से हम हैंडल करते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। इंग्लिश के लिए हम कैसे कॉल हैंडल करते हैं, हम हिंदी के कॉल्स हैंडल नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ इंग्लिश के कॉल्स हैंडल करते हैं। वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया, हमारी इंग्लिश तो इतनी टॉप क्लास होगी नहीं, ठीक है, ये बात हम सबको एक्सेप्ट करनी है। बट अगर आप MICC में जा रहे हो, अगर आपको किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पे कमांड होना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर अच्छा होना चाहिए और जैसे इंग्लिश या अमेरिकन लोग जैसे एक्सेंट में बात करते हैं आपको वैसे बात करना चाहिए, नहीं। पहली बात, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो दे विल गिव यू एक्सेंट ट्रेनिंग। whenever I am talking you must be, आपको लग रहा होगा कि मेरा एक्सेंट थोड़ा सा चेंज है, क्यों है, ऐसे पहले नहीं था। they have given me trainings. For example, हम बोलते हैं water, where, this is not the right way of pronouncing, it should be water, where, like that, जैसे कि वो प्रोनाउंस करते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आपको कॉल्स लेने से पहले ये सब ट्रेनिंग्स दी जाएगी, और उससे भी पहले आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। आई नो हम सब इंडिया में रहते हैं, हम सबकी इंग्लिश इतनी हाई हाई क्लास नहीं है, बट आप सीख सकते हो यूट्यूब से, या इंग्लिश में कुछ शोज देखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। नंबर 2 इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई कॉल लिया, उसको किस तरह से आपको एक फॉर्म में डालना है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कॉल लिया, कॉल में ये सब हुआ, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा कि on 23rd of April at 10:15 a.m. I received this call where the caller was asking if the product contains any gluten content in it or not. मुझे ये सब लिखना पड़ेगा अपने फॉर्म में, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा, वो बस अपना फॉर्म खोलेगा और देखेगा क्या हुआ था कॉल में। जो कॉल में हुआ था आपको लिखना पड़ेगा कि 23 अप्रैल को इतने बजकर इतने मिनट में मुझे एक कॉल आया था, वो कॉलर पूछ रहा था कि पैरासिटामोल टैबलेट्स में एनिमल कंटेंट है या नहीं। कॉलेजन ने उसको रिस्पॉन्स दिया, कॉलेजन इन्फॉर्म्ड द कंज्यूमर दैट एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर इज नो एनिमल कंटेंट। बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो एक तो इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप सुनकर उसी चीज को डॉक्यूमेंट कर पा रहे हैं तो वो जरूरी है। दूसरा, आपको एंथुसियाज्म होना चाहिए कि मुझे किसी को हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि आप कॉल सेंटर में जा रहे हो, आप बोल रहे हो थैंक यू फॉर कॉलिंग सिप्ला, नहीं, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अमेरिकन पीपल अगर सुनेंगे ना कि आप बहुत स्लोली लेजीली बात कर रहे हो, दे विल नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विद यू। सो वो एंथुसियाज्म और वो इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 3, क्या क्वालिटी होना चाहिए। सो एज पर दी MICC स्टैंडर्ड्स, ये हमेशा बोलते हैं कि 95% से ऊपर रखो मार्क्स। नाउ क्वालिटी और वो मार्क्स कैसे देते हैं। क्वालिटी रिव्यूअर के पास हमेशा ना एक चेकलिस्ट होता है, वो दिखेगा, उसमें लिखा होगा नाम, टेलीफोन नंबर, प्रोडक्ट नेम। नाम सही लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है, अगर लिखा है तो मार्क्स आपको मिल गए, अगर गलत नाम लिखा है तो 0 हो गया। टेलीफोन नंबर, हाँ टेलीफोन नंबर भी ठीक लिखा है तो वहां पे आपको मार्क्स मिल गए। इवेंट यानी कि साइड इफेक्ट, नहीं, साइड इफेक्ट आपने गलत लिखा, क्यों, द पेशेंट मेंशन आई गॉट रैशेस ओनली ऑन माय आर्म्स, आपने लिखा ऑल ओवर हिज बॉडी, तो आपने गलत लिखा, तो वहां पे आपके मार्क्स कट होंगे। सो इफ यू आर गेटिंग 95%, इट्स वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो, और आराम से MICC में यू विल बी एबल टू गेट 95। The only thing to work on is little bit of command over English and documentation. इंग्लिश आप बहुत अच्छी इंप्रूव कर सकते हो अगर आप इंग्लिश में शोज देखना स्टार्ट करोगे थोड़ा बहुत। एटलीस्ट हम सब इतना तो बोल सकते हैं ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग सिप्ला, हाउ मे आई हेल्प यू। दे विल आस्क यू what is the animal content, I will check the information, I can say no it does not contain animal content। इतना तो हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं ना, बस कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है। मैम और एक क्वेश्चन है। मैं अभी बायोटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे क्या चैलेंजेस होंगे अगर MICC में वर्क करना हो तो? And what is your specialization, sorry? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेस, BSc MSc इन सबको लेते हैं। बट क्योंकि आप फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं हो तो थोड़ा सा आपको चैलेंज आ सकता है मेडिकेशन नाम को लेकर, क्योंकि कई बार फार्मेसी के लोग जितना मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसमें चैलेंज आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको लेने से पहले ट्रेनिंग देगी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं।
वो बस पहले लेने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि आपका तो इंग्लिश का कमांड देखेंगे कि कितना कॉन्फिडेंट है बंदा इंग्लिश में बात करते हुए। दूसरी बात, वो आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, एडवर्स इवेंट क्या है, एडीआर क्या है, जो कि आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा, जस्ट वो आपको डेफिनेशन याद रखना है। और आपको एमआईसीसी के बारे में पूछेंगे, एमआईसीसी के बारे में पता है तो मैं आपको अभी जो बता रही हूँ आप उसको आराम से इंग्लिश में बोल दो एंड दैट इज इट। प्रोडक्ट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन से मेडिसिन होंगे, क्या होंगे। कोई भी कंपनी अगर आपको लेगी तो वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, एक्सेंट को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, और वो आपको ये भी बताएगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। So they will give you a heads up that we are getting most of the questions which is related to the animal products. ठीक है, सो सब इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपना दिमाग लड़ाना है, आपको अपना इंफॉर्मेशन और अपना नॉलेज यूज करना है। यू डोंट नीड टू यूज योर नॉलेज, वट एवर द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल विद यू, आप वहीं से अपना इंफॉर्मेशन दोगे एंड वो सब आपको इंफॉर्मेशन लीफलेट सब आपको दे देंगी कि ये सब प्रोडक्ट का है, इसी में से इंफॉर्मेशन देख के बताओ। यू डोंट यूज योर नॉलेज। ठीक है, सो trainings you will get, the only thing is little bit of good command over English and be confident and just know the basics of PV, एई क्या है, एडीआर क्या है, डिफरेंस क्या है, एमआईसीसी क्या है, और एमआईसीसी में हम क्या करते हैं। बस इतना अगर आपको पता चल गया देन एवरीथिंग इज फाइन। Okay, ma'am. Thank you so much. You're most welcome. Any other questions? If not, then we can proceed ahead with the workflow. Please confirm if my slide is visible, which is showing the workflow, call workflow. Yes, ma'am. Okay. So as I was getting questions, what do we do in MICC? What is the process? If I get a call after that, where it will go? वहां से वो कहाँ पे जाता है? So this is the call workflow. So MICC, I can classify MICC in two parts. First is call. First you will take calls, and secondly you will document it. So call workflow and document workflow. Call agent receives a call. I will receive a call. Call agent give the welcome message and takes the name and contact number of the caller. For example, I am working for Cipla. I will say, thank you for calling Cipla. You are speaking with ZZZ, whatever is my name. How may I help you, ma'am? Or how may I help you, sir? So इसको हम वेलकम मैसेज कहते हैं। जब हम कहते हैं ना थैंक यू फॉर कॉलिंग सिप्ला, थैंक यू फॉर कॉलिंग J&J, हाउ मे आई हेल्प यू, ये वेलकम मैसेज होता है कि हम उसको वेलकम कर रहे हैं हमारे कॉल सेंटर में। उसके बाद वो बोलेगा आई हैव सम क्वेश्चंस regarding your product. What I will say that definitely ma'am I will help you, but may I have your name and telephone number? इतना तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं ना कि अपना नाम और पता दे दो भाई, they will provide it to you. Now I will ask what do you want to know, ma'am? They will ask what is the preservative content, or the product is smelling bad, or I got vomiting after taking your product. So आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर वो एनिमल के बारे में पूछा इसका मतलब वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है। मुझे बस अपना इन्फॉर्मेशन चेक करना है, उसको बोलना है कि मैम इसमें एनिमल कंटेंट नहीं है। अगर वो कंप्लेंट कर रहा है कि नहीं बहुत बेकार स्मेल आ रही है, द कलर इज डिफरेंट, आई विल गेट टू नो ओ दिस इज पीक्यूसी, बैच डिटेल्स लेना जरूरी है। सो आई विल आस्क द लॉट नंबर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट। कभी कभी क्या होता है कि लोग पीपल आर यूजिंग अ पर्टिकुलर मेडिसिन बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, सो एक्सपायरी डेट के बाद ऑफ कोर्स कलर ऑफ द प्रोडक्ट माइट चेंज। सो एक्सपायरी डेट भी पूछ लो उससे, बैच डिटेल्स पूछ लो। if someone is asking that oh I got rashes, I got vomiting, so हमको पता चल जाएगा भाई ये साइड इफेक्ट है, ये एई में जाएगा। तो एई फॉर्म आप ओपन कर लो, एई फॉर्म में जो जो लिखा है वो सब पूछ लो, कब हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम बाद आपको रिएक्शन हुआ। सो ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द केस टाइप। एमआई है तो एमआई में हमको ज्यादा कुछ पूछना नहीं, नाम, पता, प्रोडक्ट नेम, इन्फॉर्मेशन देना है। पीक्यूसी आया है तो बैच डिटेल्स आपको पूछना है। एई आया तो आपको पता है आपको क्या पूछना है, राइट? आप अपना इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको बोलोगे मैम इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू, और भी आपको कुछ आपकी और किसी प्रकार से सहायता हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं उसको सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। अगर वो बोलेंगे कि नहीं तो ठीक है, आप डिस्कनेक्ट करोगे। अगर वो बोलेंगे कि जो भी आपने अभी मुझे इंफॉर्मेशन दिया मेरे ईमेल पर भी भेजो, तो आप बोलेगे ठीक है, आई विल सेंड दैट इंफॉर्मेशन ऑन योर ईमेल, प्लीज प्रोवाइड मी योर ईमेल आईडी। उसका ईमेल आईडी ले लोगे और जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसको दिया कॉल पे उसको ईमेल में भी आप भेजोगे। So that is how a call workflow is there in MICC.
कॉल आता है, लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ना क्वेश्चन पूछेंगे तो आप पता लगा पाओगे कि ये कंप्लेंट कर रहा है, साइड इफेक्ट बता रहा है, या जैसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे उससे। और जैसे ही आपने क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन ले ली, अगर उसको और कुछ पूछना है, आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे और आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दोगे अगर उसके पास और कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन नहीं है पूछने को। ये तो खत्म हो गया हमारे कॉल के बारे में। कॉल ले लिया, इन्फॉर्मेशन दे भी दिया। अब आता है जो भी आपने कॉल में किया उसको डॉक्यूमेंट करो। Just whatever you have done in the call, just document it. For example, आपको MI आया, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, MI का फॉर्म आपने पिकअप कर लिया, नाम जो भी कॉलर ने दिया था वीना शर्मा, टेलीफोन नंबर 1234, ईमेल आईडी देने से मना कर दिया था, प्रोडक्ट था पैरासिटामोल टैबलेट्स, और शी वांटेड टू नो whether the product is lactose free or not. Collagen provided the information that the product is lactose free. बस आपने जो भी कॉल में हुआ सब अपने फॉर्म में डाल दिया। PQC अगर आया था आपके पास तो आप वही लिखोगे कि नेम, टेलीफोन नंबर, ऑफ कोर्स दैट यू विल आस्क, then the product name you will ask, what was the complaint the consumer was asking or telling you. On this date, this time I received a call. Consumer complained that the product was smelling bad, and he was not able to take the product because it was very bad. So he mentioned that the smell was like a fish oil smell. कभी कभी people will say that it's smelling bad. तो उसको पूछो कि किस तरह का स्मेल आपको आ रहा है. They will say that it's kind of fish oil. Just people will say that it's smelling like fish oil. ठीक है, तो आपको अपने इंफॉर्मेशन में देख के बोलना होगा कि सर वी हैव पुट फिश ऑयल, और फिश ऑयल इस प्रोडक्ट का एक पार्ट है, तो इट विल स्मेल लाइक अ फिश ऑयल. सो ये कंप्लेन नहीं है. ठीक है, कई बार देयर आर सो मेनी कफ सिरप्स जो कि लेमन फ्लेवर के होते हैं. So if it's lemon flavor, you will get the lemon flavor smell, right? Or you will, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो लेमन फ्लेवर की तरह टेस्ट आएगा क्योंकि उसमें हमने लेमन फ्लेवर डाला है. If someone is calling you and telling you कि oh it tastes very bad, it tastes like lemon, so वो complaint नहीं है भाई, that is the real taste of the medication. You will tell them that ma'am or sir, this is the real taste of the lemon. अब तुमको पसंद नहीं आ रहा तो that is not a complaint. बट हाँ, अगर इंस्टेड ऑफ लेमन दे आर सेइंग कि वो चेरी की तरह टेस्ट कर रहा है, फिश ऑयल की तरह टेस्ट कर रहा है, देन इट इज अ कंप्लेंट, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट लेमन फ्लेवर का है और उसको अगर कोई और फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय प्रोडक्ट. Then you will take the product quality complaint. You will mention in the form that the person was complaining that the medication tastes bad and he wanted to know why your medication tastes bad. तो ये सब आपको लिखना है बस. ठीक है, सो आपने कॉल ले लिया, कॉल को आपने डॉक्यूमेंट कर लिया. डिफरेंट फील्ड्स होंगे फॉर्म में, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, रिएक्शन हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, वो सब आपको होगा, आपको बस भरना है वो फॉर्म. ठीक है, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कॉल में वो भी आपको लिखना है कि द कंज्यूमर वाज इन्फॉर्म्ड दैट दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन लैक्टोज. जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको लिखना है. और आपको वो क्वालिटी रिव्यूअर को, जैसे कि मैंने कहा, क्वालिटी रिव्यूअर को आपको ये फॉर्म भेजना है. क्वालिटी रिव्यूअर आपका फॉर्म चेक करेगा, वो आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा. जो भी आप कॉल ले रहे होते हो MICC में, ऑल द कॉल्स आर बीइंग रिकॉर्डेड. आप किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करो, आपको एक IVR, एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देगा that all the calls are being recorded for our quality and training purposes. So जो भी आप कॉल्स लेंगे वो सब रिकॉर्डेड होते हैं. सो वो कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेगा, वो देखेगा कि फॉर्म सही से अपडेटेड है या नहीं. अगर है तो वो सीधा क्लाइंट को जाता है. सो दिस इज व्हाट वी डू. एक सिंपल वे में अगर बताऊं तो कॉल लेते हैं, सेम को डॉक्यूमेंट करते हैं. बट इतना भी सिंपल नहीं है. अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे बस कॉल लेना है, डॉक्यूमेंट कर देना है, छोड़ देना है, नहीं. अगेन इट कम्स टू द लाइफ ऑफ अ पेशेंट. यू आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट. कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन हुआ, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने डॉक्यूमेंट किया, तो वही गलत इन्फॉर्मेशन आगे आगे भी जाती रहेगी.
ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर में कॉल लेने के बाद वो खत्म हो गया। वोडाफोन में आपने रिचार्ज नहीं किया, उसने बोला कि 2 घंटे के बाद रिचार्ज रिफ्लेक्ट होगा, वो खत्म हो गया केस। नहीं, MICC में ऐसा नहीं है। यू विल टेक द कॉल, यू विल अपडेट द फॉर्म, ये फॉर्म अब केस प्रोसेसिंग पीपल के पास जाएगा, वहां पे वो केस प्रोसेसिंग करेंगे। केस प्रोसेसिंग होने के बाद ये FDA में जाएगा। सो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉल्स में सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एंड यू आर टेकिंग द राइट इंफॉर्मेशन एज वेल, बिकॉज वन सिंगल इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन विल मेक, और ये पूरा होल चेन को बिगाड़ देगी आपका एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। दैट इज वाई फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई एम सेइंग दैट वी आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया, हमने क्लाइंट के पास फॉर्म भेज दिया, क्लाइंट दोबारा से आपको बोलेगा कि इस पर्सन ने अपना ईमेल आईडी नहीं दिया है, इस पर्सन ने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है, प्लीज कॉल बैक एंड आस्क फॉर द डेट ऑफ बर्थ। तो आपको वो बोलेगा, केस प्रोसेसिंग वालों को नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि कॉल बैक करो और पूछो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमको जानना है इस पर्सन का एज कितना है। कई बार लोग बोलते हैं, क्योंकि सी USA में पीपल विल नॉट टेल यू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से कॉल्स ले रहे हो, आप किस तरह से उससे बात कर रहे हो। इन USA इफ यू आर टेलिंग हाई मैम, हाई सर, they will not feel good. But if you are addressing them, if you are calling them by their name, hi Mr. Robert, hi Mr. Johnson, hi Mr. Smith, they will feel more connected with you and they will just share more information with you. So that all comes under email, that all comes under call etiquette, how to take the call. It's not something that you're talking to your friend. Professionally, how to take calls, and all such trainings will be given to you by your company. So it all, again and again I'm saying the same thing, it all comes on you. You are the first point contact, आपसे ही चेन सारी स्टार्ट हो रही है PV की। So आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे इंफॉर्मेशन सही तरीके से ले, दे और उसको डॉक्यूमेंट करें। So any questions till now about the call workflow and the document workflow? If there are no questions, I'll just share. I'll go to my next slide. Ma'am, Yes. if consumer not given sufficient information from there कॉल अपने को, तो आप हम फिर से उसको कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूछोगे I want to know your name, telephone number. If they are saying I don't want to provide, you will never ever call back. Client भी आपको कभी नहीं बोलेगा कि call back करो, because USA में, UK में जो उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, भाई नाम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। अगर उनको मन है वो देंगे, और अगर उन्होंने मना किया, you will never ever force anyone. But हाँ, if there is any miss from your end, for example आपको एक साइड इफेक्ट का कॉल आया, बट आप पता नहीं लगा पाए कि साइड इफेक्ट है कि नहीं। उसने क्या बोला आपको कि मुझे पूछना है कि इसमें ग्लूटेन है क्या, मैंने ये मेडिकेशन ले लिया और मुझे रैशेस हो रहे हैं ग्लूटेन ये मेडिकेशन लेने के बाद। तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे आपको और 2 इन्फॉर्मेशन दी। एक उसने बोला कि मुझे पूछना है ग्लूटेन है या नहीं क्योंकि मुझे रैशेस हो रहे हैं, तो उसने मेडिकल इन्फॉर्मेशन पूछा और उसने अपना साइड इफेक्ट भी बताया। तो ये AE प्लस MI हो गया, ये 2 कैटेगरी हो गई इसकी। तो MI के लिए आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और AE के लिए आपको रिस्पॉन्स डिटेल्स देनी पड़ेगी। बट समहाउ आपने मिस कर दिया या जो भी है, अगर आपकी तरफ से मिस हुआ है तो आप डिस्कस करोगे अपने क्वालिटी पर्सन के साथ कि मैंने ये मिस कर दिया, गलती है मेरी, तो आपको दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्सन बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू प्रोवाइड एनी ऑफ माय इंफॉर्मेशन, तुम बस चुपचाप मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, इसमें ग्लूटेन है या नहीं, आप चुपचाप उसको इंफॉर्मेशन दे दोगे और वही आप फॉर्म में अपडेट कर दोगे भाई आगे जाके कि आई कॉल एजेंट आस्क्ड फॉर द डिटेल्स बट द कंज्यूमर डिनाइड प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वही फॉर्म क्लाइंट पढ़ेगा कि अच्छा कॉल एजेंट ने क्वेश्चंस पूछे थे, डिटेल्स पूछी थी, उन्होंने मना कर दिया, दैट इज इट। उसके बाद वो केस वैलिड बने इनवैलिड बने, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। बट हमको प्रोबिंग करनी है, हमको पूछना है। ऐसा नहीं है कि अरे कॉलर बहुत ज्यादा गुस्से में था, मैंने तो पूछा ही नहीं डर के मारे। सी, यू डोंट नीड टू टेक इट पर्सनली, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। वो गुस्से में हो या खुशी में हो, आपको प्रोबिंग करनी है, आपको पूछना है। पूछने के बाद दे ना दे वो उसकी मर्जी है। सो अगर
कॉलर मना करता है कुछ देने के लिए, वी विल नेवर एवर कॉल बैक, क्योंकि अगर हम कॉल करते हैं ना तो वो हमारे पे लीगल केस भी कर सकते हैं। बट अगर आपने कुछ मिस कर दिया कि अरे मैं टेलीफोन नंबर लेना भूल गई, अरे मैं एज पूछना भूल गई, देन वी विल कॉल बैक। Okay, ma'am. Thank you. So it's very simple in MICC. If they are providing the information, well and good, document the same. If they are not, document the same as well, that they did not provide the information so that no one will ask you. तो बहुत सिंपल है, information दिया है तो document कर दो, नहीं दिया है तो नहीं करना है. Now some people was asking me, they were asking me about the skills which is required for MICC. But before I go to the skills, I have something to show you guys. From the very beginning, I'm telling you guys that हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे पास जो भी लीफलेट या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है उसमें से देखकर हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना। वो ऐसा क्या है जिसको देखकर हम इंफॉर्मेशन देते हैं? आई विल जस्ट शो यू। Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see, right, that I'm scrolling my screen. मेरा स्क्रीन स्क्रॉल होते हुए दिख रहा है ना? No, no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. How about now? Yeah, now it's clean. Yes, ma'am. It is scrolling, right? Yes, ma'am. ओके, सो मैंने जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये एक वेंसन फार्मास्यूटिकल्स है, जैसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स है, जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स है, वेंसन फार्मास्यूटिकल्स भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बड़ी कंपनी है। सो उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से मैंने बस एक प्रोडक्ट उनका लिया है, विच इज अमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ओके, एंड दिस इज द लेबल। आप किसी भी कंपनी के लिए काम करो, आप सिप्ला के लिए काम कर रहे हो, आप सन फार्मा के लिए काम कर रहे हो, आप औरबिंदो फार्मा के लिए काम कर रहे हो, जो भी कंपनी है वो आपको MICC लोगों को ये लेबल देती है, ये फुल लेबल आपको देगी, और इसी में से ही आपको देखकर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दिस लेबल, व्हाट दिस लेबल कंटेन्स? नाउ whenever a pharmaceutical companies, जब भी वो कुछ क्लिनिकल ट्रायल करती हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या रिजल्ट्स उनके पास आए थे, अगर उन्होंने किसी एनिमल के ऊपर वो क्लिनिकल ट्रायल किया था तो क्या रिजल्ट्स थे, कैसे कैसे लोगों पे उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किए थे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इन सब के अंदर प्रेजेंट होती है। मैं अगर कोई पैरासिटामोल की टैबलेट खा रही हूँ, मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होगी, राइट? इवन ओनली इफ आई एम अवेयर, आई विल गो टू देयर वेबसाइट, और अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, मैं यहाँ से जाके चेक कर सकती हूँ। बहुत सारे लोगों को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता, इसलिए जब भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो हमको ईमेल करते हैं, मेल करते हैं, या फिर कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये अमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के लिए एक क्वेश्चन आया कि इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले हैं आपने इसके अंदर, what is the ingredient which you have used in this medication? What you will do, you will ask the NDC number. I was telling you, about the NDC number. अगर मैं ये NDC नंबर भी कॉपी पेस्ट करके गूगल पे भी डालू ना, इट विल शो मी दैट इट इज फ्रॉम स्ट्राइड्स फार्मा और वेंसन फार्मा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बता देगा आपको। सो NDC नंबर इज द नेशनल ड्रग कोड नंबर, जो कि एक 10 डिजिट नंबर होता है। कई बार पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द NDC नंबर, आपको बारकोड नंबर गा के सुनाते हैं दैट दिस इज द NDC नंबर। यू नीड टू टेल देम दैट मैम इट्स अ 10 डिजिट नंबर। ओके, तो आप उसे NDC नंबर पूछोगे, वो आपको अपना मैन्युफैक्चरर का नाम बताएगा। दिस इज द डिस्क्रिप्शन व्हिच इज मेंशन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है कि इज डेजिग्नेटेड जनरली एज अमेंटाडिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका केमिकल नाम क्या है, ये सब लिखा होता है इस लेबल में। फुल कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस सब में लिखी होती है। एज आई मेंशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है कि एक मेडिकेशन है जो कि एंटीवायरल ड्रग है। कई बार क्या होता है ना कि लोग
एक पर्टिकुलर मेडिसिन को किसी दूसरे यूज के लिए यूज करते हैं. दिस इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन, बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर समथिंग एल्स इट इज नॉट recommended. So अगर आपको कोई कॉल आ रहा है that I'm using amantadine hydrochloride और मुझे vomiting हो रही है, तो उसको पूछो for what reason you are taking that medication. Oh, I am using it for my headache. Then tell them that ma'am, it's not for headache, it is for antiviral and you should use it for the same purpose. ठीक है. So इस लेबल के अंदर आपको mechanism of action दिखेगा, pharmacokinetics, pharmacodynamics. I will not go detailed into this. I just want to show you what and all information is available. इंडिकेशन किस चीज के लिए यूज होता है, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के लिए यूज होता है या फिर जो भी है जिस चीज के लिए भी यूज होता है. वार्निंग्स भी इसमें लिखे होते हैं. कई बार कई मेडिसिन के साथ आप अल्कोहल नहीं ले सकते. And people in America, they are very used to alcohol, be it a man, woman, or whatever gender it is. They're very much used to alcohol. They might call you and ask you that, oh, I took a sip of alcohol and now I'm feeling drowsy, I'm feeling sleepy. It means it's an AE. और आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैम, taking alcohol with this medication is contraindicated, so do not take it. और AE के लिए तो आपको जो information लेना है वो that you will take. Precautions कभी कभी लिखे होते हैं that this medication should not be taken by a pregnant woman, a breastfeeding woman, और बहुत सारी information should not be given to a child under 10 years of age. See, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या क्या क्लिनिकल ट्रायल में इंफॉर्मेशन है उनके पास, ये सब इनका अवेलेबल होता है. Amantadine hydrochloride is excreted in human milk. Use is not recommended in nursing mothers. If someone is calling you and asking you that I'm a nursing mother, should I take this tablet? No, because it is excreted in human milk. So आपको अपने से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो देना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है नर्सिंग मदर्स के लिए, और कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि आई एम अ नर्सिंग मदर, आई डू द ब्रेस्ट फीडिंग, शुड आई टेक दिस टैबलेट, आप चेक करोगे इस पूरे उसमें लेवल में. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये मत बोलो कि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है. आप इसको ये बोलो कि अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, द इंफॉर्मेशन इज करेंटली नॉट अवेलेबल, बट आई विल डिस्कस दिस विद माय टीम. तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्लाइंट को पूछते हैं, सिप्ला को पूछते हैं, स्ट्राइड्स या वेंसन फार्मास्यूटिकल जो भी है, दैट डियर टीम, हमको एक आज क्वेश्चन आया जहाँ पे वो इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रही थी, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है. अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज हमको दीजिए ताकि हम सेम कंज्यूमर को भी बता सके. उसके बाद आ जाता है एडवर्स रिएक्शन का. देखो यहाँ पर कॉमन साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं कि 5 से 10% लोगों के अंदर नॉजिया, डिजीनेस और इंसोम्निया देखने को मिलता है. कोई इंसान अगर आपको बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है रात को ये मेडिसिन लेने के बाद, तो उसको बोल दो कि इंसोम्निया एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन आप एडवर्स इवेंट फाइल करोगे. आप उसका नाम, पता, कब हो रहा है, कब से उसको नींद आनी बंद हो गई है, कितनी बार ले रहा है वो दिन में, और किस चीज के लिए ले रहा है, कौन कौन से दूसरे मेडिकेशन वो ले रहा है, ये सब पूछना. ओवरडोजेज अगर किसी ने कर लिया, मैंने ज्यादा मेडिसिन खा ली, मैं क्या करूं, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं. एनडीसी देखो, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे टैबलेट के बॉटल्स आते हैं, एक बॉटल के अंदर 100 टैबलेट होता है, एक बॉटल के अंदर 500 टैबलेट होते हैं. तो दोनों के लिए दो डिफरेंट एनडीसी है. देखो, फर्स्ट फ्यू डिजिट सेम है, 42543, 42543, 49497. 100 बॉटल्स के लिए 01 है और 500 बॉटल्स के लिए 05 है. अगर वो इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं ना एनडीसी नंबर, आपका आधे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है. आपको प्रोडक्ट का नाम, आपको स्ट्रेंथ, आपको कौन से बॉटल का है, कौन मैन्युफैक्चरर, सब पता चल जाता है. कई बार पीपल विल से दैट मैंने एक आई ड्रॉप लिया था और मैंने उसको अपने फ्रिज के अंदर मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया है उसको, इज इट गुड? नो. आस्क देम कि करेक्ट स्टोरेज कंडीशन ये है, उसके ऊपर नीचे आप मत रखो उसको. तो ये जो पर्टिकुलर लेबल है आपको आपके क्लाइंट आपको देंगे, और वो हमेशा आपको बोलेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें, फॉर एग्जांपल आपको ये मिला है, आप कंट्रोल एफ भी करोगे ना, मैं रिएक्शन लिखूंगी ना, अपने आप सारा रिएक्शन आ जाएगा. यहाँ पे देख रहे हो, अपने आप सारा रिएक्शन, जो जो जहां जहां पे रिएक्शन लिखा है वो आ गया. एडवर्स रिएक्शन लिखा तो एडवर्स रिएक्शन में पहुंच गई. तो अगर कोई आपको कॉमन रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि प्लीज मुझे कॉमन रिएक्शन कौन कौन से हैं बता दो, तो आप बस सर्च करना, आपको उस पेज पे ये पहुंचा देगा. आपको पूरा स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं है. सो जो भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट है आपको वो देना पड़ेगा, और यहीं से हम जो है अपना सारा इंफॉर्मेशन देते हैं.
So any questions for this? Hello, ma'am. Ma'am, I have a Priyadarshini is question. here. Yes, yes. Yes, हेलो Priyadarshini, मैम। please. या Yes. यस मैम। मैम, अगर हम मतलब यूएसए यूके कनाडा के लिए वर्क कर रहे हैं तो टाइम जोन अलग है, तो उस हिसाब से हमारा कंपनी टाइम क्या होगा? यस, सो मोस्टली MICC जो है वो यूएस शिफ्ट में काम करती है। जैसे कि मैं काम करती हूँ इवनिंग 5:30 से लेट नाइट 2:30, ठीक है। बट आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज एज वी ऑल नो कि हम विमेंस को थोड़ा ऑफिस जाने में इस टाइम में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे रात को 3 बजे 4 बजे काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मोस्टली MICC में 5:30 से 2:30 टाइमिंग्स होते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके के लिए काम कर रहे हो, लंदन के लिए काम कर रहे हो, तो लंदन के लिए आपका टाइम होगा आफ्टरनून 12 से रात को 9 बजे तक। बट मोस्टली हम यूएस शिफ्ट में काम करते हैं विच इज 5:30 to 2:30, और उसके लिए आपको अलग से नाइट शिफ्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू एनी कंपनी, अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं भाई तुम फ्रेशर हो, यू हैव टू कम टू ऑफिस, सो दे विल प्रोवाइड यू कैब, दे विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, दे विल प्रोवाइड यू ऑल द अदर थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। आपको स्नैक्स दिए जाएंगे रात को। आई एम जस्ट गिविंग यू more detailed information, but I feel it's very required for you guys to decide whether you should go for MICC. हर एक चीज आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रात को आपको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं, कैब, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। एंड नाउ डेज as far as I am aware, all the companies are giving work from home. और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग भी करते हैं। कभी कभी जापान का टाइम जब होता है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग करना पड़ता है, जैसे कि सुबह 5:30 से दोपहर को 2:30 बजे तक आप कर सकते हो। अगर आफ्टरनून शिफ्ट है तो आपको सुबह 12 बजे से 9 बजे तक आपका होगा। लेकिन मोस्टली क्योंकि यूएसए में प्रोडक्ट्स हम लोग ज्यादा बेचते हैं, कोई भी मेडिकेशन हो, कोई भी मैन्युफैक्चर हो, तो शाम को 5:30 बजे से रात को 2-2:30 बजे तक आपको करना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू। Ma'am, I have a question. यस प्लीज। Ma'am, actually, I just wanted to check my understanding whether it is correct or not. So you said whether it's an adverse event or not, we need to report it. I mean, we need to take all the information from the caller and we need to report it. Is that correct, ma'am? Yes, if someone is saying that I got rashes, now you will go to the label which I was showing to you. You will see that, oh, rashes is a very common side effect. Even if it's a common side effect, you need to take all the information. We need to report. Common hai, nahi hai, that is a different thing. But if someone is reporting, we need to make a note of this. And you will take all the required information. Someone is saying that, even if someone is saying no, that the smell is bad and I vomited, तो अगर हमारे प्रोडक्ट के बैड स्मेल की वजह से किसी को वॉमिटिंग हुई, सो दैट इज ऑल्सो एन एडवर्स इवेंट। टेक ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट इट। वो लोग कभी नहीं बोलेंगे, कंज्यूमर विल नेवर कॉल यू एंड टेल यू आई वांट टू रिपोर्ट। उनको तो पता भी नहीं है एडवर्स इवेंट क्या होता है। इट्स इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म जो कि सिर्फ लाइफ साइंसेज लोगों को या जो भी फार्मेसी जो पीवी में है उनको पता होती है। दे विल जस्ट टेल यू दैट मे बी आई एम वॉमिटिंग फ्रॉम टुडे, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच यू हैव पुट इन। So ingredients ka information you will give, but they are vomiting also. So you will ask that, ma'am, here in the medical information department, we do document the consumer experiences. I have just few questions to ask you. May I please proceed? अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ प्लीज यू कैन आस्क, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क फॉर द क्वेश्चंस। कब वॉमिटिंग हुआ, क्यों हुआ, कोई और मेडिकेशन ले रहे हो। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू एनी इन्फॉर्मेशन, देन डिस्कनेक्ट द कॉल, मेंशन द सेम। But if there is any adverse reaction, you need to report it, no matter if it's a common side effect or non-common side effect. Did I answer your question? Yes, ma'am. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Hello, ma'am. This is Justini. Hi, Ashwini. Ma'am, if there is a complaint against three criteria of MICC, okay, like उसका मतलब
DQC का हुआ या फिर प्रोडक्ट कंप्लेंट हुआ या फिर उसका इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो मतलब 3 जो क्राइटेरिया है उससे सब कुछ कंप्लेंट हुआ, तो हम लोग उसका क्या मतलब 3 फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर मतलब एक ही में तीनों क्राइटेरिया रख के करेंगे? नहीं, उसके लिए फिर आपको क्या होगा कि जैसे अगर आपको वो बोल रहा है कि स्मेल भी गंदी आ रही है, मुझे पूछना है इंग्रेडिएंट्स कौन से डाले हैं, स्मेल की वजह से मुझे वॉमिटिंग भी हुआ। तो पहले उसने पूछा कि स्मेल गंदी आ रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेन हुआ। कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं, वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और उसने वॉमिटिंग भी किया तो वो एडवर्स इवेंट में आ गया। तो आप पता है यूजुअली क्या होता है कि हम जब कोई भी डेटाबेस यूज़ करते हैं ना, आपको बस लिखा होगा उसमें AEMI PQC अदर्स। अदर्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या करोगे, बस टिक कर दोगे उसको AEMI PQC। तो जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे वैसे वैसे उसमें फील्ड से बढ़ते जाएंगे। अगर MI आपने सिर्फ टिक किया है तो आपको बस कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स दिखेंगे, नाम, टेलीफोन नंबर, प्रोडक्ट का नेम, और आपको एक लिखने के लिए, नैरेटिव के लिए जगह दी जाएगी जहां पे आप लिखोगे कि ऐसा कॉल आया। एज सुन एज यू विल टिक ऑन PQC, एक और टैब बढ़ जाएगा, बैच डिटेल्स का टैब आ जाएगा अपने आप। एज सुन एज यू विल टिक AE, और से टैब्स अपने आप बढ़ते जाएंगे, और जैसे कि एडवर्स इवेंट का टैब दिखने लग जाएगा आपको, या रिएक्शन का टैब दिखने लग जाएगा। सो आपको बस टिक करना होता है उन टैब्स में। जैसे ही आप उन सब टैब्स को टिक करोगे तो आपके पास वो टैब्स अपने आप आ जाएंगे, आपको फिल आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ फॉर्म अपडेट कर रहे हो तो एक फॉर्म आता है जिसमें तीनों फॉर्म आपको अपडेट करके भेजने पड़ते हैं। तो आप तीनों फॉर्म अपडेट करोगे। यू करेक्टली सेड दैट यू नीड टू अपडेट 3 फॉर्म्स। डेटाबेस में काम करे तो बस टिक कर दो, अपने आप ऐड होते जाएंगे फील्ड्स, बस अपडेट करो भेज दो। फॉर्म कर रहे हो तो फॉर्म के लिए एक अलग अलग फॉर्म है, तो तीनों फॉर्म को अलग अलग करके आपको भेजना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। Okay, now we'll go to the next slide, which is skills required for MICC. I think I have discussed it earlier as well कि कौन कौन से स्किल्स आपको चाहिए। एक गुड कम्युनिकेशन होना जरूरी है। वी आर फ्रॉम इंडिया, we will not be having a hi-fi English, but I would suggest you all to please go to YouTube. You all must be having a smartphone with a good internet connectivity. I am sure about that. So what you can do is you can go to YouTube and you can go for accent neutralization. See, हम लोग का जो accent है उनके accent से हम match नहीं कर सकते, हमको करना भी नहीं चाहिए। All I want to say is कि आपका pronunciation सही हो। If your pronunciation is correct, the other person will be able to understand you. कैसे pronunciation हमको सही करना है, जैसे मैंने बोला कि where, why, water, हम लोग ऐसे बोलते हैं, but this is not the correct pronunciation. It should be where, why, water. This is the correct pronunciation. So if you are pronouncing it correctly, there'll be no issues with that. Be confident whenever you're speaking. Take care, or you should be enthusiastic to help the consumer, and you should be interested in consumer and customer service. थोड़ी सी basics knowledge about PV. See, I cannot go to each and every topic over here, but आप Google में जाके फार्माकोविजिलेंस क्या है उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन आप देख लो। AE क्या है, ADR क्या है, ये सब आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। MICC में तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे आप करोगे। एक गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल होना चाहिए। आप कॉल में जो सुन रहे हो आपको वो लिखना आना चाहिए कि कैसे मैं इसको लिखूं, कॉल आया था, क्या इन्फॉर्मेशन दिया मैंने, क्या उसने पूछा, इन सब का जो है आपको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है इसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि आप जब भी MICC में काम करते हो तो हमेशा आपको अच्छा कॉलर मिलेगा इज नॉट गारंटीड। Sometimes you will get angry callers, sometimes you will get a good caller, sometimes you will also get an abusive caller जो कि आपको गाली भी दे सकते हैं। नंबर वन थिंग, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको कभी भी कुछ पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब। नंबर टू, इफ देयर इज एन एंग्री कॉलर, अगर कुछ देखो, अगर मुझे कुछ रिएक्शन हुआ है आपके प्रोडक्ट को लेकर, I am working, I'll not take the company name with whom I am working, but मैं कंपनी के साथ काम करती हूँ जहां पर एक मेडिसिन जो कि यूएसए में बिकती है, उस एक मेडिसिन का दाम 80,000 रुपीज है। इंडियन रुपीज आई एम टॉकिंग अबाउट 80,000 रुपीज। अगर 80,000 की एक दवाई लेकर
कोई देख रहा है कि अरे मैंने इतनी 80,000 की दवाई ली और इंजेक्शन लिया, उसमें एक मुझे इंसेक्ट दिख गया, तो सबको गुस्सा आएगा ही आएगा. They will get angry, they will call you, they will call the manufacturer company. It's very obvious for them to get angry, right? But if they are being angry, if they are abusing you sometimes, that does not mean that you will start abusing. उस टाइम पे आपको उनको काम डाउन करना है, दैट मैम I do understand, sir, I do understand, I will help you, I will file a complaint against you, but I need some information from you, please allow me to go ahead with my questions. इस तरह से आपको हमेशा काम रहना पड़ेगा. कोई अगर अच्छा कंज्यूमर है तो कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं है, बट कभी कभी एंग्री कॉलर्स में आपको सी यू डोंट नीड टू टेक इट पर्सनली, बस बी काम. और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो बस शांत होकर बैठ जाओ. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम AEMIPQC, मेडिकल इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट और साइड इफेक्ट के अलावा भी कभी कभी हमको कॉल आते हैं, वो अदर्स कैटेगरी में जाते हैं, जो कि MIPQC AE में नहीं जाते हैं. उसका होता है अदर्स. अदर्स क्या क्या होता है कि आपके मेडिकेशन बहुत महंगी है, 80,000 रुपीज फॉर 2 वायल्स और 3 वायल्स. आई कैन नॉट अफोर्ड इट. मुझे कुछ ऑफर मिल सकता है, मुझे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है. तो ये ना ही MI है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं ना, वो तो प्राइस के बारे में पूछ रही है. PQC भी नहीं है, AE भी नहीं है, तो ये अदर्स में जाता है. ये पूछ सकते हैं कि आई वॉज अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन सिप्ला, मैंने जॉब अप्लाई किया है, मुझे तो जॉब के लिए कुछ आया नहीं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है. ये अदर्स कैटेगरी में जाता है. कभी कभी वो पूछते हैं कि मैं 10 साल से आपकी मेडिकेशन खा रही हूँ, तो मुझे बस एक फीडबैक देना है कि आपका जो मेडिकेशन का बॉक्स का कलर है वो रेड मत रखो, ब्लू रखो. कभी कभी लोग ऐसे फीडबैक्स भी देते हैं कि ब्लू, रेड कलर मुझे पसंद नहीं है, उसको मत रखो, ब्लू रखो. फीडबैक दिया है, सो इट विल गो टू अदर्स. So such calls also you will also get, but the important part is that don't take it personally. कोई भी कॉल आता है, कोई भी एंग्री कंज्यूमर से, डोंट टेक इट पर्सनली. आपका काम है इंफॉर्मेशन देना एंड लेना. नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेना भी नहीं चाहते, दैट इज ऑल्सो फाइन. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Ma'am. Okay. So here's the next slide, which is opportunities and challenges. You can see my screen, right? Yes, ma'am. सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं MICC में. एज आई मेंशन दैट एक इंटीग्रल पार्ट है PV का, और सारी कंपनीज के अभी MICC के सेटअप हैं. क्योंकि MICC में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो PV में, पैशनेट हो इन हेल्पिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, देन यू शुड definitely come to this field. Plenty of opportunities available in the market. I don't need to tell you guys, you must be seeing so many opportunities and vacancies for MICC. The only challenge which I see over here is timings. कभी कभी लोगों को timings में problem होती है. But once you get acquainted with that shift, आपको कोई issues नहीं होगा. आपको बस 5:30 बजे शाम से आपको log in करना है. You need to take calls, document it, submit it, and go back to your personal life. So you will get plenty of time to have a good work-life balance. तो यहाँ पे मोस्टली हम US, UK, EU shift timings में काम करते हैं. I have seen there are some people who face difficulties when it comes to timing, especially if you are married or something. But if you're getting work from home, I don't think that you should face any challenges. And what is the career in MICC? Once you get a good amount of experience, आपको as a MICC specialist भी hire किया जा सकता है. Now, who is the MICC specialist? आप बस कुछ specific calls दोगे, जैसे कि बहुत ज्यादा कोई गुस्से वाला कॉलर है, कोई फ्रेशर से नहीं समझ रहा है, तो वो आपको ट्रांसफर कर देंगे कॉल. दिन में 1-2 कॉल लेने हैं, बट यूली मोस्टली इनटू क्वालिटी रिव्यू पार्ट, जो कि मैंने बोला, आपको बस चेक करना होगा कि फॉर्म ठीक से भरा है, ये ठीक से भरा है. आप फिर उसको क्लाइंट को सेंड करना पड़ेगा. कुछ साल के बाद आपको सिर्फ क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए ये लोग रखेंगे कि आप बस क्लाइंट के साथ बात करो, ठीक है. सो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद you will get a good position. And as I already told you that यहाँ पे remuneration, यानी कि जो यहाँ पे salary है, package है, is more than as you will get in other PV projects. Also
Career will start as a collagen, definitely, but with experience, you will be given a very crucial role. For example, quality review, or you will be responsible for training others. अगर कोई नए बंदे आ रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उन लोगों की. So ये सब चीजें भी MICC में है. आपको 1-2 साल का बस एक्सपीरियंस हो जाए, then you are good to go to this new challenges. Also, my next slide is how to prepare for an interview. As I mentioned, a good communication होना जरूरी है. Be confident. We are Indians. We will not have hi-fi English. I'm again telling you, but you can improve the way you are talking. अगर जल्दी जल्दी बात नहीं कर पाते तो ठीक है. धीरे धीरे बोलो. But pronunciation should be clear. You should sound confident. ओके, सो स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा आपको जो है वो अच्छा होना पड़ेगा. एंड बेसिक नॉलेज अबाउट पीवी. एई एडीआर, आपको इसका इंफॉर्मेशन, एई एडवर्स इवेंट, एडवर्स रिएक्शन, इसका डिफरेंस क्या है. आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू एवरीथिंग, बट आप जस्ट इसको गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा. डेफिनेशन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर. FAR क्या है? FAR का फुल फॉर्म होता है फील्ड अलर्ट रिपोर्ट. फील्ड अलर्ट रिपोर्ट क्या है कि जब भी कोई इंसान किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेंट करता है, स्मेल अच्छी नहीं है, टूटा है, ये है, वो है, तो हमको यूएस एफडीए को एक फॉर्म भेजना पड़ता है. उस फॉर्म का नाम होता है फील्ड अलर्ट रिपोर्ट. उस फील्ड अलर्ट रिपोर्ट में हमको सब कुछ लिखना पड़ता है कि क्वालिटी कंप्लेंट किस लिए आई, किस चीज के लिए आई. और यूएस एफडीए फिर उसमें एक बहुत ही मतलब यूएस एफडीए इसको ट्रैक डाउन करता है कि अच्छा इस सिप्ला के इस प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक मुझे 5 कंप्लेंट्स आ चुकी है. अगर एक पर्टिकुलर नंबर के बाद वो कंप्लेंट बढ़ जाती है तो यूएस एफडीए उस प्रोडक्ट को मार्केट में से निकाल देगा. फॉर एग्जाम्पल, हजारों लोग कॉल कर रहे हैं कि आपके वायर में इंसेक्ट मिल रहा है, आपके बॉटल्स के अंदर इंसेक्ट मिल रहा है. तो हमको हर एक प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट के लिए FAR फील्ड अलर्ट रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. हम नहीं करेंगे, क्लाइंट करेंगे. सबमिट करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर. अगर मुझे आज एक कॉल आया, 23 अप्रैल को कॉल आया, तो मुझे 26 अप्रैल के अंदर अंदर ये फील्ड अलर्ट रिपोर्ट, एक फॉर्म है, यूएस एफडीए को सबमिट करना पड़ेगा. सिप्ला को बताना पड़ेगा कि मेरे इस प्रोडक्ट के लिए मुझे अभी तक 50 प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स आ चुके हैं. अगर नंबर इंक्रीज हुआ तो यूएस एफडीए उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि यूएस एफडीए बैठी इसलिए, they are for this. They will check that, oh, people are having so many issues with this particular product, there is something wrong with this product. They will take back the product from the market, they will do the investigation. Agar sab sahi hua, they will again relaunch or remarket the product. So what is FAR? FAR is a field alert report, is a kind of a reporting form which needs to be submitted to the US FDA within the 3 days of getting the product quality complaint. आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगी. What is GVP Module 6? आप just गूगल में इसको कर लो. I am sure that you must be aware of GVP Module 6. GVP Module 6 में कुछ नहीं है, बस किस तरह से हमको AE रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह से करना है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट. And one more information, if you are giving interview for MICC, they might ask you that, देखो अच्छे कॉलर्स को तो हर कोई हैंडल कर सकता है. अगर कोई अच्छा इंसान है, अच्छे से बात कर रहा है, तो कोई भी हैंडल कर सकता है. डिफिकल्टी आती है एंग्री कॉलर्स के बारे में. तो they might ask you, for example, if someone is calling you and the person is very angry, how you will handle. तो उस टाइम पे आपको रिस्पॉन्स देना है कि देखो अगर कोई पर्सन है जो कि एंग्री है, what I will do is I will try to make the person very calm. I will not abuse back. I will not get angry. I will not take it personally. So इस तरह के आपको information जो है वो देने पड़ेंगे if someone is asking you in the interview how to handle an angry caller. Now, my last slide is about questions. I have already asked you such questions, guys, in between, that if someone is stating that he's vomiting after taking a medication, so what case category it belongs to? Anyone? Right. Adverse event. And how you will handle a medical inquiry? क्या क्या questions आपको पूछने चाहिए MI के लिए? Drug name, patient name, age. gender. Right. And my last question.
What is the difference between MICC and a normal call center or BPO? Uh, No. MICC deal with life of patient. Correct. That is the most important difference. We are dealing with the life of a patient, other call centers don't. So here comes the end of this session, guys. I hope that this session was helpful to you. And I know that people who want to start their career in MICC, they have a very big question that, oh, it's like a call center. I don't want to work for a call center. No, it's not a normal call center. Let me tell you that. I've already told you, we are dealing with the life of a patient, and MICC is not only about taking calls. There is so much more to that. Emails, websites, social media, sometimes chats also. So it's all about helping the consumers or patients with their questions, taking down the adverse event report. We are the first point of contact. We are responsible for taking all the required information. So it's more than that. And here comes the end of the session. I want to ask you if you have any questions, please feel free to ask me. Any questions, any confusions, कुछ भी आपको पूछना है MICC के बारे में. Ma'am, what is the minimum package for this job for a fresher? Okay. Ashwini, before I go to that, may I know what is your qualification? Ma'am, I'm B Farm graduate and I have 2 year experience in QA in Okay, great. industry line. Okay, so as far as I know, the basic package starts from 2.7 to 3 lakhs for a pure fresher person. And if you have experience in the industry like manufacturing or quality assurance, then you might get up to 3.2 to 3.5. This is the basic package I'm telling you for freshers. And you will also get some other perks like you will get bonus, you will get night shift allowance, which is additional. But starting will be from 2.7 to 3. And if you have a bit of experience in some other fields, it might start from 3.2 to 3.5. Okay, ma'am. How can we apply for this job? मतलब कैसे You need, लिंक्डइन के थ्रू या फिर मतलब कुछ पर्सनली या फिर कंपनी के में डायरेक्ट एप्लीकेशन देके या फिर एचआर के पास. G, exactly. So what you can do is you can apply through Naukri. LinkedIn is the very good platform, and we are having so many opportunities. For example, I can tell you the names. Amit, can I tell the name of the organization which are having opportunities right now? I mean, there are some. In MICC, Yes, right. in it is a clean choice. It is 4C. These two organizations we are connected. Okay. There is also Indigi. You can connect with them, HR, if you want. You can also connect with Navitas Quinixa Life is also Sciences. there, right? Sorry? Quinixa, that is before it is Bioclinica. It is now Yes, Quinixa. right. And they are having openings. They are having Yes. openings and they're providing work from home as well. Indigene is also providing work from home. Also, we have one more. I just forgot the name. Eversana. So what you can do is you can connect with their HR. Eversana is having a huge opening for MICC, but I think they are calling to office. So it's up to you if you want to go and join the office. You can connect with them. Eversana, Indigene, Navitas, ClinChoice also they were having, but ClinChoice is also providing permanent work from home. And ClinChoice is a very good company to work for because they have less call volumes. So ClinChoice is there, but as of now, currently active hiring is for Indigene, Eversana, and Bioclinica. But before you attend for that interview, make sure that you have a good command over English and you are sounding confident. Hello, ma'am. Yes. This is Preeti. Is there other experience counted? I mean, I have pharmacist experience, compounding and dispensing of medicines. More than See,
Yes, it's good, Preeti, that if you have experience in other fields, but if you're going to any field under PV, they will not consider this as an experience. They might give you a bit higher package, but they will only consider you as a fresher. The only thing is that if you have experience in MICC, they'll give you a very good package. But having experience in other fields, for example, being a pharmacist or in a QA, they usually don't consider that as as an experience. हेलो Okay. मैम, प्रियदर्शन इज हियर। मैम, Yes, Priya. अगर अगर हमारा एक्सपीरियंस है इंडिया में MICC के साथ वर्क करने का, और 1-2 साल बाद हम अगर यूएस या अदर कंट्री में शिफ्ट होते हैं, तो ये एक्सपीरियंस वहाँ पे जॉब करने के लिए काउंट किया जाता है? मतलब आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि वो इंडिया में वर्क करते थे और बाद में वो शिफ्ट हो गए अदर कंट्रीज में? Definitely, मैंने देखा है. I have seen many colleagues of mine who started their uh, career in MICC, and because in MICC in India we are talking in English, we have a good command over English, and with over the years we will just polish our knowledge. So after that, what they do is they just apply in Canada or USA, और कभी कभी कंपनी ही आपको वहाँ पे शिफ्ट कर देती है. So मैंने देखा है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, then they will switch to different countries. ओके मैम, थैंक यू। Hello, ma'am. There is a one question by Amol. How to work on voice modulations? Right, good question. So all I can say is that you can go to YouTube. जो भी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है ना, वो भी यूट्यूब से ही देखकर देती है. ठीक है, यूट्यूब से देखकर ही आपको वो पीपीटी बनाएंगे. कभी कभी वो हायर करते हैं एक्सेंट ट्रेनर्स को या जो भी. यूट्यूब इज एवरीथिंग. जस्ट गो टू दैट. मॉड्यूलेशन में अगर आप किसी से बात कर रहे हो, कब आपको पिच हाई करनी है, कब लो करनी है. कभी कभी वो लोग आपको, मोस्टली ओल्ड एज पीपल विल कॉल यू, दे हैव इश्यूज इन हियरिंग. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाकर बात करो. इसका मतलब आपको बस अपना टोन थोड़ा, या फिर आपको जो अपना पिच थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा. और सबसे important which is there in MICC is the accent neutralization. Just go to Google and type accent neutralization. Just go to YouTube and type accent neutralization. Accent neutralization is a kind of training which will help you to pronounce the words correctly. I am not saying that you need to talk like American people or British people. You just need to pronounce the words correctly. As far as you are pronouncing the words correctly, everyone will be able to understand you, and you don't need to fear about your accent. Just pronounce the words correctly. So you can go for accent utilization. This is a kind of training which will include everything: the modulation, the pitch, the correct way of pronouncing the words, everything. Okay, ma'am. There is one more question. Any suggestions for improving pronunciation? Yes, as I mentioned, that you can go for watching English shows, English cartoons, if you love watching that, with subtitles. So you will see that how they are pronouncing. There are so many classes available over the internet. They will tell you, with, if you are saying water, there should not be any obstruction. Whenever we are saying water, there is an obstruction between our upper teeth and lower lip, but the correct way of pronouncing W is water. It should come automatically. There should not be any obstruction. So when you go to YouTube, you'll see the videos how they are changing the shape of their lips, their tongues, because that is play a very important role with the correct pronunciation. So go to those videos, see how they are making their face. There is no obstruction. If there is obstruction, how they are making their face, how they are pronouncing it, and all such videos will definitely help you. And watch more and more English shows, read more. It will help you to improve your English. Hello, ma'am. Hi. Hello. Yes, Tamiksha. Yeah, ma'am. If we get the call from the client, other except English language, means Japanese language, so how we will answer the client?
Yes, sorry, I just forgot to tell you that. Yes. So what they will do is that we will only answer the call over English. If someone is calling you in Japanese or Chinese language, you will have a number. They will provide you a number कि अगर चाइनीज में कॉल आता है तो 1234 इस नंबर पे आप कॉल कर दो, उनको ट्रांसफर कर दो उनके पास, आपको बस ट्रांसफर करना है, दैट इज इट, nothing else you will do. So for French people, for Japanese and Chinese people, you will have some numbers. Company will provide you the number that if you get any call in Chinese language, for example, if you're getting a call, you will get to know, right? Someone is not talking on English. So you'll just ask which language are you talking. They'll say that I'm talking in Japanese, Chinese, Spanish. So उस हिसाब से आपके पास नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, कंपनी ने आपको दिया होगा, जस्ट ट्रांसफर कर देना है आपको. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. No problem, welcome. Okay, any more questions? Okay. मैम इस क्वेश्चन में मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन्स रहते हैं क्या कंपनी में, या वो लैंग्वेज ही ट्रांसफर करते हैं क्या? नहीं, जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो जैसे सिप्ला है, तो सिप्ला ने तो पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट कर रखे हैं, तो वो लोग आपको एक किसी दूसरी कंपनी का, एक जो ट्रांसलेटर कंपनी होती है बहुत सारी, तो ट्रांसलेटर कंपनी का नंबर आपके पास होगा और उसमें सब लिखा होगा, जापान का आता है तो आपको ये कोड डायल करना है, वो कोड डायल करना है, तो आपको बस वो कोड डायल करना है और वो ट्रांसलेटर कंपनी के पास पहुंच जाएगा. हमारी कंपनी में से कोई भी उसको आंसर नहीं करेगा, ये दूसरी ट्रांसलेटर कंपनी होती है जो कि उसको ट्रांसफर करेगी, मतलब उनसे बात करेगी. आपको बस क्या करना है, आप थर्ड पर्सन होकर वहां पे रहोगे बीच में. मेरे पास एक जापानीज कॉल आया, उसने मुझे बोला कि आई एम टॉकिंग इन जापानीज, तो मुझे तो जापानीज नहीं आती है, तो मैंने अपने सिस्टम में देखा कि मेरे पास एक नंबर है 1234, मैंने 1234 डायल किया और वो जापानीज ट्रांसलेटर जो है उसके पास कनेक्ट हुआ. नाउ अब मैं जो हूँ वो जापानीज वाले को बोलूंगी कि प्लीज आस्क हर द नेम, तो वो उससे जापानीज में नाम पूछेगा, ठीक है, और जब वो बताएगी तो वो जापानीज ट्रांसलेटर बोलेगा कि शी इज सेइंग हर नेम इज दिस, तो उसके बाद मैं लिखूंगी. तो हमको बस बीच में रहना है, क्योंकि आप डायरेक्टली जापानीज पर्सन के साथ बात नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि उसको जापानीज नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, आपको जापानीज नहीं आती. तो जब एक ट्रांसलेटर बीच में आ जाएगा, जब आपने ट्रांसफर किया कॉल को, तो एक ट्रांसलेटर बीच में आ जाएगा, 3 लोगों के बीच में कॉल कॉन्फ्रेंस होगी, आपके बीच में, कंज्यूमर के बीच में, ट्रांसलेटर के बीच में. आप ट्रांसलेटर को पूछोगे, ट्रांसलेटर कंज्यूमर से पूछेगा, कंज्यूमर फिर उसको आंसर देगा और ट्रांसलेटर आपको बोलेगा कि भाई ये आंसर वो दे रहा है, और कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है तो मुझसे पूछो, मैं उसको पूछूंगा और वो आपको आंसर बताएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट ऐसा Hello, ma'am. बहुत कम होता है. Hello, ma'am. Is this applicable for only in Indian people? Means, for example, or we can now we are just discussing about MNC, multinational companies. But what about Indian people? What about especially for India? For example, I am from Maharashtra and I don't know English. I just want to ask in Marathi. Then I call to MICC, and how they answer me means they will provide me any Marathi or any specific language person or what? So Nilima, we are having MICC for Indian companies as well, but it is very less. The companies which are running MICC for India is very less. They have very small MICC. Even if you have any product, if you call them, for example, Himalaya is a company. They have MICC or Medical Information Call Center, जो कि आपको आपके regional language में they will give you the information. But it is not the case with all of the company, and most of the companies they will hire people for MICC for US ships. इंडिया के लिए बहुत कम पैसा है और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, बट Okay, यूएस और दूसरे कंट्रीज के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं. it's just for MNC. Means, Yes, yes. maybe in future it will be If you want beneficial to be a for part of MICC, you can go for Farm Easy as well. There is one more thing, Farm Easy, and there's so many other things from where we order this medicines. They are also hiring persons. So वहाँ पर आप हिंदी में काम कर सकते हो, मराठी में काम कर सकते हो, regional language में काम कर सकते हो, but you will not get a good opportunity okay. over.
as much It as you is get not it. more applicable for in India. Means just we But want you to. can apply for pharmacy, you can apply for Yeah, yeah. other things. That is also MICC. Okay. Thank you, ma'am. Okay, any more questions? All right. Okay, if we don't have any further questions, I would like to thank all of you guys. And if there is any opportunities in my knowledge about MICC, and if freshers are required, I will definitely connect with Amit, and Amit can give this information to you Yeah, guys. surely I will forward this. Yes. And in the meanwhile, just go through all these things. You know, you have smartphones, good internet connection. Just go through pharmacovigilance, AE, ADR, FAR, GVP Module 6, accent utilization, how to talk confidently. And MICC is a good field to start your career with. And with this, I end the session over here. Thank you for attending this session, and thank you, Amit, for having me here. And Yes. you all Thank have a you very for good day ahead. yes, thank you for delivering such a wonderful session. I hope every students will got every slides and whatever you tell, every student will connect and learn accordingly because there is opportunity, but definitely for that the skills and knowledge required, and for that reason we this today's session may be helpful to gain the knowledge whatever required at industry level. So prepare accordingly, and yes, if any opportunity we will connect even in the future as well, any I think updated information about this, so we will get back to you also. So thank you for a delivering session, and yeah, any query student, everyone understood today's session? Sir. Yes, Okay. sir. Okay, okay, fine. All right. Thank you, Amit. Thank you all. Yes, yes. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Current, yeah, current batch students, you don't leave the session, okay? There is notification for you. Rest, earlier batch session you can leave, don't click. Yes, all, you understood everything, समझ में आया आज का session, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, yes, thank you. So आज अभी मानसी मैम है आपके साथ, मतलब यहाँ पे मीटिंग में, so you can ask any query related to project or any अभी जो projects दिए हैं and related to our course you can ask. Are you there, ma'am? Hello. Yes. Hello. Yes, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. Yes, so now you can ask me, queries, because I remember I posted two messages. One is regarding your exam and another is regarding your PPT, right? So, also from next week onwards, we will be starting with PPT. Okay. So let me know what all questions you have related to your project or something like that. MCQ we have already done. Okay, 30 marks MCQ that is done. Now the PPT is pending, mock interview is pending, and the overall interaction, right? So you have questions around that particular pointers which I posted yesterday. Yeah, ma'am. This is Ashwini, ma'am. Huh? Ma'am, my topic is special case scenario in PV. मैम कुछ क्राइटेरिया जो ने आपने जो भेजा है ना, वो कुछ थोड़ा बहुत कुछ क्राइटेरिया उसमें पॉइंट में नहीं आ रहे हैं. हाँ, तो okay. So overall, Ashwini, I mean, let me take the overview of PPT. So, okay, the overall your certification
program will be like you are attending all the topics lecture. So how we can judge your knowledge, okay, or how we can assure ourselves and yourself whatever you have learned in the certification course is up to the mark or not, right? So for that we will be having few parameters. Those parameters are: number one, MCQ test. That is done. Any questions related to MCQ? No, I guess everyone attempted that. Next, we have the PowerPoint presentation. So PowerPoint presentation and the topics are given. It will be individual task. Okay. So like रेवती का टॉपिक और प्रीति शेडगे का टॉपिक अगर सेम भी है तो भी रेवती विल प्रिपेयर हर ओन प्रेजेंटेशन, Preeti will prepare her own presentation. Okay. Now, in general, to guide you, when we ask a PowerPoint presentation on a topic, what is our expectation? So these are some general outlines which I have mentioned. Not necessary आपके टॉपिक से रिलेटेड हो. If you think this particular pointer you can include in your topic and the information is available over internet, over books, then you can add. Otherwise it is not mandatory. For example, अगर किसी को बोला गया कि okay कुछ give your self introduction. A person is saying, my name is XYZ, I am from Pune, I have completed my Bachelor of Engineering, I have a family of 4. Still, it is fine. If someone is saying, my name is XYZ, I am from Nasik, I have completed M Pharma, full stop. Still, it is fine. So, it is not mandatory कि आपके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में जितने भी पॉइंटर्स मैंने दिए हैं वो होने ही चाहिए. It is not mandatory. If it is applicable, that is the reason I have mentioned that if it is applicable to your topic, then you should include it. One more thing, do not consider this particular presentation as a big thing. ऐसा बाप रे अभी मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं. We have asked you to prepare just 5 to 7 slides on a given particular topic. जो मैंने टॉपिक्स एनलिस्ट किए हैं, दैट इज द आइडियल फ्लो. कि स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया ऑब्जेक्टिव, जैसे कि अश्विनी का टॉपिक है स्पेशल सिनेरियो. तो स्पेशल सिनेरियो मतलब क्या, उसका क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसमें कौन से क्लासेस आते हैं, एक दो लाइन में आपने एक्सप्लेन किया. कंपोनेंट्स, उसके कुछ टाइप्स है क्या, उसके बाद फंक्शन. अगर स्पेशल सिनेरियो इज अ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, उसमें फंक्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, या आप जब बुक्स रीड करोगे, आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करोगे, आप अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा, राइट. आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो अच्छे वाले तो आपको पता चलेगा. उसके बाद सो दीज आर सम आइडियल फ्लो आई हैव गिवन. Include it as per your applicability of your topic. I will be happy if you do not include this and include some other part. For example, अगर आप कुछ और एक नया बुलेट डालते हो तो भी मैं खुश हूँ. We as a as a teaching staff, we would like to know how much you have understood this topic, right? How much you are prepared for the new upcoming job role, your dream job, your dream career. ओके. तो आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट मत करो, अरे मैम मेरा टॉपिक है पीवी प्रोग्राम इन इंडिया और यहाँ पे आपने लिखा है फ्यूचर, तो क्या इसका कुछ फ्यूचर ही नहीं है? तो ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यू अगर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, डू नॉट इंक्लूड दैट बुलेट. लेकिन व्हाट इज अ फ्यूचर, व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज? हर टॉपिक का कुछ ना कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, कुछ ऑटोमेशन है, कुछ उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, या कुछ न्यू recent breakthrough है which flashing out on newspaper, mobile, internet, everything. Try to find out that and write. The topics are given for your own understanding कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना अच्छा रिसर्च कर सकते हो, राइट. सो ट्राई प्रिपेयरिंग इट. ऐसा कोई भी नहीं है. अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल suppose I said from 29th we will be starting a PowerPoint presentation. Okay. अगर काजल का है 29th को, काजल ने कुछ उसमें मिस्टेक्स किए, अगर मैंने कहा ओके काजल दिस इज अ स्कोप, यू कैन करेक्ट दिस मिस्टेक.
स्टिल इट इज ओके। ऐसा नहीं है कि काजल को उस दिन के बाद कभी चांस नहीं मिलेगा पीपीटी में, शी कैन इम्प्रोवाइज इट, बट वी वांट टू सी कि आप क्या करते हो। सी नाउ यू आर नॉट ऑन अ 12th स्टैंडर्ड, यू आर ऑलमोस्ट इनटू 3rd 4th फाइनल ईयर फार्मा और एम फार्मा, राइट। तो पीपीटी बनाना इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। वी जस्ट वांट टू सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड योर टॉपिक। अगर एक अननोन टॉपिक दिया जाए तो उस पे आप कितना अच्छा रिसर्च करके एक सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन लाते हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो एज अ टीचिंग स्टाफ हमें पता चले, एज योर फ्रेंड्स, एज योर बैचमेट्स, दे विल लर्न सम न्यू थिंग्स। सो दैट इज अ मोटिव। सो डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि अरे भाई मेरे टॉपिक में अभी this is the ideal flow, and you can include this. Hello. Yes, ma'am. Okay. So PPT we will be starting from 29th. I request all of you start preparing. Okay, as per your topic. I guess sir has shared one reference PPT. Okay, in the group. You can refer that. See, हमें ज़्यादा decoration नहीं करना है PPT में. In PPT, the important is how much you have understood. तो first slide रहेगा आपका खुद का नाम. Okay, सेकेंड स्लाइड से पीपीटी ही आपको स्टार्ट करना है। एक्नॉलेजमेंट, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, वो सब कोई जरूरत नहीं है। यू विल बी प्रिपेयरिंग इट इंडिविजुअली। सो फर्स्ट स्लाइड विल बी टॉपिक नेम, योर batch, and directly from slide number 2 you can start with actual topic. Do not go beyond 7 8 slides, because each one of you will be given only 10 minutes. In 10 minutes individually you need to present the topic, so that please do not extend the number of slides beyond 8. In this 10 minutes you are supposed to explain your topic very well, and at the end we will take up a question answer. Okay, so please do not afraid कि भाई मेरा presentation कैसे होगा. Okay, as of now I cannot tell you whether you will be given a second chance or not, but yes, I can assure you, do not worry. Put your maximum attention, focus on writing the good content. ओके, अगर आप गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो इंश्योर करो कि किस कंटेंट का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, क्या चीज जो आपको बेसिकली पता है। अगर आपको पता है तो आपके बैचमेट्स को भी पता होगी। ऐसी कुछ चीज टॉपिक रिलेटेड जो नई है, इनोवेटिव है, रीसेंट है, ट्राई टू इंक्लूड दैट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. So do not worry. I will repeat again. Start preparing. Okay. Start preparing. Meanwhile, if you have any doubts regarding PPT, you can ping in the group. I will try to respond as the time permits. Okay. But again, do not overthink. Do not पैनिक कि पीपीटी बनाना है, पीपीटी बनाना है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं. इट इज वेरी सिंपल. जस्ट इंश्योर यू आर डिलीवरिंग गुड कंटेंट. दैट्स इट. ओके. Practice in the front of mirror, practice in front of your family members, practice in alone कि आपने लिखा है, आप बोल पाते हो या नहीं, whether you are able to speak it or not. Okay, so likewise just relax and start working, finding good content, do some research and start preparing your PPTs. The third is mock interview. Mock interview के लिए already we have session. Okay, so on 29th we will be starting with PPT. After PPT there will be some time slot where I will be covering the actual, like a session, how to prepare for interview, just like the trainer one gave you few tips earlier.
Similarly, I will be sharing few pointers which you can consider for interview preparation. And at the end, अभी आपके mock interview start होने में थोड़ा time है. So as you know, last time also I heard Amit sir was insisting कि आप अपने resume submit करो, आप अपने resume submit करो. तो जैसे हम लोग आपको कुछ एक एक इंस्ट्रक्शन स्टेप्स देते हैं ना, स्टार्ट फॉलोइंग दैट. डू नॉट ओवर थिंक कि जो चीज आपको 2 महीने के बाद करनी है. ओके, सो एज ऑफ नाउ वर्क ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आई विल बी टेकिंग पीपीटी. हाफ ऑफ द टाइम पीपीटी में जो भी इम्प्रूवमेंट करने हैं वी विल डिस्कस देन एंड देयर. अभी आपको भी नहीं पता कि आप कैसे पीपीटी बनाओगे. सो अननेसेसरी इफ आई स्टार्ट गिविंग यू कि पीपीटी का ये फॉन्ट होना चाहिए, ये इमेज गलत है, साइज इतना ही होना चाहिए, सो अननेसेसरी यू विल वरी. So what my suggestion is, you start preparing. As we start with the presentation, I will come to know what is your mistake or what are your areas of improvement, and accordingly I will share the tips. Okay, agree with everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. yes. Okay, so जो भी टॉपिक्स दिए हैं ना, अगेन आई विल रिपीट, इट इज इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीति और नीलिमा का टॉपिक एक है तो प्रीति आप और नीलिमा बात कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में बात करो. To present individually, Revati has to, Kajal or other any other student who has got the same topic has to prepare and present individually. Okay, so start preparing. Open a PowerPoint presentation, usko naam do. Start making slide number 1, slide number 2, and as we start with actual presentation, I will share the tips with you. I will share the reviews, my feedback with you कि ये इससे अच्छा हो सकता है या ये जरूरत नहीं है या ये इसमें ऐड करो, डिलीट करो, जो भी है. राइट. सो अगर आप अभी ही स्टार्ट करोगे, मैम सुनो मेरे टॉपिक में ना ये नहीं है, मेरे टॉपिक में वो नहीं है, तो वो तो लिस्ट बढ़ते ही चली जाएगी. इट विल बी अ नेवर एंडिंग डिस्कशन. Okay, and again, regarding the last, I will tell you, it won't be only ppt, it will be ppt plus interview preparation, ppt plus your query discussion, ppt plus some other discussion, right? And hence it is mentioned in the topics also. It ppt, then we have the mock interview directly start nahi hoga, so don't worry, we will share tips and proper session with you, and then we will start with the mock interview. ओके, सो इट विल बी सेशन. आपको सिखाया जाएगा कि मॉक इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, इन पर्सन कैसे होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे होता है, एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग असेसमेंट्स विथ यू. ऐसा डायरेक्टिंग नहीं होगा, अच्छा टुमारो प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू, ओके काजल टर्न ऑन योर कैमरा, नहीं. We will share some tips with you and then we will start assessmenting you. Is it clear? ओके. Yes, ma'am. यस, और एक लास्ट डाउट था, असाइनमेंट्स. ओके, असाइनमेंट. सो असाइनमेंट्स ना, व्हाट आई सजेस्ट इज, जितने भी I mean, I guess now I'm the only one who is taking you the core subject. What I suggest is you prepare, all of you prepare one Word document, one simple Word document, and write down your name. आपने Word document open किया. For example, let me share my screen. Okay, is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है. ओके, इसको आप रीनेम करो. ओके, इसको जैसे आपने रीनेम किया आपके खुद के नाम से. ओके, ओपन. ओके,
टॉपिक नरेटिव राइटिंग। ओके, नरेटिव राइटिंग के जितने भी जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपने यहाँ पे लिख लिया। क्लोज दिस, submit this document to sir or Snehal ma'am, okay, or to the email address which is suggested by the sir, so that we can check it. Next lecture, if you have the MEDRA, okay, open your same document, write the topic name MEDRA, okay, ये MEDRA है, यहाँ आपने MEDRA के क्वेश्चन आंसर कर लिए। okay, save the document and submit it as such, so that if जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल मानसी अगर चेक कर रही है नीलिमा का असेसमेंट, आई कैन सी all her assignment in single document. Okay, I can note down, okay, Nilima has completed narrative writing ka assessment, okay, next her MEDRA ka assessment, and that will be easy for me. Instead of you sharing separate फाइल मत भेजो, दिस विल बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट, और ये आपके लिए भी इजी होगा whenever you want to prepare for exam or whenever you want to prepare for your interview, और just आपको एक रेफरेंस चाहिए, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पूरे जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक अटेंड किए सबके क्वेश्चन आंसर का सेट है आपके पास. So whenever you are attempting any MCQ, it will be easy for you to refer a single document. Okay, so every time you will be sharing this document only, just you need to update your assignment here. Okay, आपको टॉपिक नेम डालना है, आपको असाइनमेंट डालना है. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, is it feasible for you? Do you find this easy instead of having multiple documents? आपके लिए भी आसानी होगी, जो भी पर्सन आपके क्वेश्चन आंसर चेक कर रहा है उसे भी आसानी होगी कि अच्छा ये है. फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर में अगर प्रियदर्शनी एब्सेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रियदर्शनी का जब मैं डॉक्यूमेंट खोलूंगी तो मुझे दिखेगा ना कि उस दिन प्रियदर्शनी ने सबमिट नहीं किया असाइनमेंट, बट नाउ शी हैव सबमिटेड 2 असाइनमेंट, जो उसने लास्ट वीक का नहीं सब कर पाई थी वो, और अभी रिसेंट वीक का. ओके, सो likewise it will be easy for you to keep a single document into your laptop or your computer, and for us also it will be easy to check. Clear? Yes, ma'am. Okay, so now everyone do not be in hurry. आप आराम से आज के दिन में एक ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए जहां पे आपने जितने भी अभी तक के असाइनमेंट्स किए हैं, रीसेंट वन इज मेड्रा, जितने भी आपने अभी तक के असाइनमेंट किए हैं, कॉपी पेस्ट इन अ सीक्वेंस. Okay, and then I will discuss with Amit sir and Snehal madam how and when you can submit your documents for the final review. Okay, but meanwhile at home you start making one document and copy paste all the completed assignment one below the other. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, तो हम लोगों ने डिस्कस किया असाइनमेंट रिलेटेड. इसके बाद जितने भी असाइनमेंट आएंगे एक सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटिन्यूएशन में आपको लिखते जाना है. जैसे एक जर्नल हुआ ना, जर्नल हम लोग एक सिंगल ही बनाते हैं फार्मास्यूटिक्स का, एक इसमें लिख दिया एक उसमें लिख दिया, ऐसे नहीं करते, राइट? वैसे ही आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना है आपके असाइनमेंट के लिए. सो दिस इज सॉर्टेड. पीपीटी इज ऑल्सो. So next week, let's start with PPT. Okay, let's start with PPT and then I will come up with my feedback. Okay, let's not overthink कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ. At least you start. Unless you start, you will not come to know कि आपको भी क्या आता है और क्या नहीं आता है. मैं आपको 10 गाइडेंस दूँ PPT बनाने के, but if you don't know how to copy one more slide, उसका फायदा ही क्या है? So start preparing the PPT, and as we start taking presentation, I will share the feedback. Okay, and also do not worry about mock interviews and all. Everything will be taught to you and then we will start taking a test. Is it clear everyone? Any questions? मैम Yes, Revati. कॉजलिटी असेसमेंट का क्वेश्चंस नहीं मिला मैम पीपीटी में. Yes, ma'am. Okay, what I will do,
causality assessments की है ना? Okay, fine. Still, whichever lectures I have taken, listen. Whichever lectures I have taken, I will share all those assignments again with you on our WhatsApp group. Is it fine? Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. I will share those all assignments, causality, narrative, and medra with you all over WhatsApp group. Fine. तब तक जितने भी असाइनमेंट आपने इसके पहले किए हो, आप स्टार्ट एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लो, एक सीक्वेंस में आप सब टॉपिक्स के नाम और अपना असाइनमेंट उसके वन बिलो द अदर स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग इट. ओके मैम आप दिखा सकते हैं क्या एग्जाम्पल? वो कैसे करेंगे? अभी मैंने दिखाया ना. नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिखा कुछ प्रेजेंटेशन में. दिख नहीं रहा था मैम, सिर्फ हाँ एक मैम, नहीं दिख रहा. पेज दिख रहा है सिर्फ. screen? Now can you see my screen? यस. Everyone can see the word document, topic, narrative, writing लिखा है. नहीं दिख रहा मैम. नो मैम. Okay, okay. वो वेबसाइट ओपन नहीं हुआ. हाँ. Is anyone using a laptop here? Yes, ma'am. Okay, can you share your screen? Okay. Is anyone sharing? Who's that? Ashwini, you want to share your screen? Yes, ma'am. Okay, yeah, share your screen. So, ma'am, can I please permission? हाँ हाँ. Are you sharing, Amit? Ashwini? Oh, Are you sharing, Ashwini? Ma'am, can you reshare if it is issue of okay. please confirm everyone. Yeah. Are you able to see my screen? Yes मैम. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. So what I said, आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है. आप उसको अपना नाम दे दो. जैसे कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, I have given my name Mansi batch 5. Okay. Now this is document. Is it visible to everyone? Yes. Right. Okay. Right. यस मैम. तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है. आपको यहाँ लिखना है टॉपिक, नरेटिव राइटिंग. यहाँ पे आप अपने पूरा जो नरेटिव राइटिंग का असाइनमेंट है, यू कॉपी पेस्ट इट हियर, सबमिट टू द ईमेल आईडी विच इज सजेस्टेड. उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट इसी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको लिखना है. ओके, यू विल नॉट बी शेयरिंग अनदर डॉक्यूमेंट और एक्सेल शीट और पीपीटी. ऐसे करके एक पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आपको लिखना है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू चेक एंड मॉनिटर कि फॉर एग्जाम्पल कि काजल का कौन सा असाइनमेंट मिसिंग है. So for us also it will be easy to find out. So in a simple Word document, you will write your answers and submit after updating the same document over and over again. Simple? यस मैम. Okay. Yes. तो अगर मेट्रा में हाँ Just we have to change the name every time. what? Name change करना होगा सिर्फ every time हमें. कौन सा नेम चेंज करना होगा? और फिर का नहीं,
नेम चेंज नहीं करना है, नेम चेंज आपका खुद का नाम है। सो फॉर एग्जाम्पल आज का आपको टारगेट दिया है कि आपको ये कल सबमिट करना है, तो यू हैव टू जस्ट अपडेट दिस वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक के एक नीचे आपको असाइनमेंट लिखते जाना है और ये वर्ड डॉक्यूमेंट ही आपको सबमिट करना है। आपको टॉपिक का नाम लिखना है, आपको आंसर्स लिखने हैं और आपको सबमिट करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम आपका खुद का नाम रहेगा, काजल बैच 5, प्रीति बैच 5, अश्विनी कुमार बैच 5, दैट्स इट। समझा या नहीं समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा है सबको? ओके। Yes, तो ma'am. अभी आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी असाइनमेंट है आप सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर लो। ओके, few of you told me that you do not have causality assessment. Okay, so what I will do, जितने भी lectures I have taken, Ma'am is not audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so wait. Yes. that you can You, write you all are those not audible, answers ma'am. in the word. Fine, clear with everyone? No, ma'am. Hello, Actually, your clear voice with is everyone? No, ma'am. Mm, okay, but whatever we discussed so far, is it clear with everyone? Yes, sir. Your voice is disrupted in between. Okay, okay. Last When minute. yeah, when I explained that word document, सबको समझा कि assignment कैसे submit करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now आप सबसे पहले everyone start making your own word document. Okay. Once I post all the questions from causality, narrative, and Medra, update your assignment sheets and then finally submit. Is it clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So assignment is sorted. PPT presentation also we discussed, and mock interview regarding guidance also we discussed. Okay. So let's start PPT presentation from next week. And as we check the presentations of every one of you, I will share the feedbacks with you so that you can rectify your mistakes, and those who are pending for the presentation, you can avoid these mistakes in your PPTs. Fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, sir. Yeah, so that's it. Huh? Number wise. PPT presentation will be roll number wise. Everyone need to prepare. That we will not reveal now. It can be roll number wise or it can be randomly. Okay, so everyone has to prepare. सबके लिए टारगेट डेट है 29 अप्रैल. As of now, we cannot reveal whether we will go roll number wise, ascending order, descending order, random. No, it can be surprise as well. Randomly also we can call anyone name and we can start. So deadline has सबके लिए presentation का is next week. By next week, everyone should be prepared with your PPTs. मैम मतलब क्लास से पहले सबमिट करना है क्या प्रेजेंटेशन? कुछ भी सबमिट नहीं करना है, कुछ भी सबमिट नहीं Okay, करना okay. है. हाँ, फिर प्रिपेयर 20 करना है. Okay. yes, keep it with you. On 29 we will Okay. start and we will tell you when to submit. See if there are any mistakes, how we can conclude, right? So keep it with you, we will check and then we will ask you to final. जब polished copy होगा then we will tell you to submit. Okay. Okay. So from this Saturday, we start PPT presentation. Yes. Right, ma'am? Yeah, and you just have copy, but sometime what happens, Yes. student Yes. individual can't present, so you just share in the group whenever the presentation start. If you had any like network issue, we will share and you explain, right? It will be fine at that time. But make sure that PPT will be ready within due date before.
Got it all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And I hope ma'am already told you about the all marks consideration, like 30 marks for our PPT, 30 marks for you already done MCQs, 30 for the mock session, and remaining will be all for our assignment and your overall performance, everything task given. So this should be considered, okay, during your certification. So be sincere for all these things, and this is all for make you more professional only. Okay, so you don't only get domain knowledge here, you also had uh, personal skills, professional skills you have to learn. You are we want that you should learn from our books or other medium as well, okay, so that you will become more knowledgeable and share this thing with us. So we will check your presentation skills also during PPT presentation. It all. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Any query you can ask. Means don't feel that how can I ask, when to ask. Today we are here, so you just ask any question till now. Even after that also you can ask in group. Okay, we are there to ask. सर Yes, please ask. सर मैडम से पहले जो भी असाइनमेंट दिए थे ना वो एक बार सब सेंड कर दीजिए ना ग्रुप पे क्योंकि मैं Yes, मैम से ना कि वो आप सबमिट कर देंगे, so we will share. मैडम से पहले निनाद सर जो कुछ भी लिया है ना निनाद सर ने आई थिंक एक ही असाइनमेंट दिया था, वो एचआर का था, एचआर क्वेश्चंस, Yes. राइट? नहीं वो पहले भी दिया था, वो क्लासिफिकेशन द ड्रग्स व्हिच आर बैंड फ्रॉम इंडिया। हाँ, वो क्लास की शुरुआत में दिया था, टू नो लाइक वो टर्मिनोलॉजीज में भी दी होगी, मैं शेयर करता हूँ वो चीज, ठीक है, ग्रुप में। वो दो ही है नीना सर के टाइम पे, और बाकी अभी आपको शेयर कर देंगे मैम। सो एचआर क्वेश्चन आई होप आपने प्रिपेयर किए हैं, राइट एवरीवन? गए उस असाइनमेंट में, आपका पूरा प्रिपरेशन, आपने आंसर क्वेश्चन आपके मुताबिक प्रिपेयर किए एवरीवन? As HR question is very important in every हर इंटरव्यू राउंड में HR क्वेश्चन होता ही है, तो इसके लिए हमने आपको बोला था। सो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर थॉट, यू कैन क्वेश्चन एंड आंसर एंड प्रिपेयर इट, ओके। तो नो नीड टू कि हमें ऐसे ही करना है, यू जस्ट, बट हमें एटलीस्ट वो रिव्यू करें हम, इसके लिए आप अगर शेयर करेंगे वो, नॉट नाउ ऑल्सो, इसकी कोई डेडलाइन मतलब इस वीक करें, नेक्स्ट वीक करें, क्योंकि अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है प्रोजेक्ट का, सो यू कैन शेयर इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो एचआर क्वेश्चंस जो मीना सर के टाइम पे दिए थे। फाइन, ओके सर। ओके, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है क्या? आई थिंक सो, नहीं ना? नो सर, नो। No, sir. Okay, okay, fine. I hope you done according to your convenience, but आपके पास एक वीक है, और एक वीक काफी होता है। Means अगर स्टार्ट करेंगे अभी से तो एक दो दिन में ही ये सारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। बट सम वन हैज कॉलेजेस होता है, आपका जॉब होता है, तो इसके लिए इस टाइम में आपका हो मतलब हो ही जाएगा, स्टार्ट करेंगे आज से, ओके। Question to me or Mansi ma'am, then you can ask, otherwise Snehal will take presenting. Okay, you can take presenting, Snehal. Yes, sir. Thank you all. Have a good Yeah. week ahead. Yeah. Thank you, everyone. Sir. And all Thank the you, best. ma'am. Thank you, Don't sir. worry much. ma'am. We will be Thank there you, to sir. guide you. Okay. Happy weekend, everyone. थैंक यू मैम। Ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome. Yes, all of you give me presenting. Roll number 1, Present, ma'am. 2, 3, 4. Roll number 4, 5, Yes, ma'am. 6, Present, ma'am.
7. Roll number 7. 8. 9. Roll number 9. 10. 11. 12. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. Present, ma'am. 16. Sorry, 15. Roll number 15. 16. Present, ma'am. 17. Present, ma'am. 18. 19. 18 present. Okay. 19. 20. Roll number 20. 21. 22. Present, ma'am. 23. Present, ma'am. Okay. I just repeat the absent number. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. After that, 15, 19, and 21. Okay. Okay, so you can leave now. We will conclude the session.